Namaskar. We Namaskar. would like to welcome you all on our 534th journey of brainstorming and knowledge sharing. AYUSH SAMRIDDHI. I will request all co-hosts, I have made co-hosts, kindly admit new audiences to support me. Thank you very much for joining. Today is our global standard series, specifically on the tablets of AYUSH, because it is somewhat different from the modern tablets of powder only. Our material is herbal, herbo-mineral. So slight variations are there, but otherwise, completely the process of tablet making, tablet compression, vati, gutika, and hub and haboob, as Munsiji, the Mohsin sir told me in the Unani. So this is the common mode of administration in all ayurvedics except yoga. So without wasting much time, I would like to welcome Professor V.K. Agnihotri ji, respected Mohsin Delvi ji from World Unani Foundation, Managing Director of Delvi Remedies. Our speakers of the day, Dr. Kaushal Kumar ji, Dr. Surendra Pradhan sir, Dr. Vishnu Priya Das ji also here. Welcome, Dr. Vishnu Priya. And all the audience, respected experts in the audience, we would like to welcome you by heart. Because your inspiration, your contribution, your motivation, and your guidance is the only spirit to continue this journey for more than 2.5 years and more than 500 of episodes of scientific knowledge sharing. So thank you very much, sir, for joining today. I would like to request Professor V.K. Agnihotri sir for his welcome address. Welcome. Namaskar, Professor Pawan Sharma ji. Thank you for providing me this opportunity to welcome of today's guest speakers. It's a great pleasure and privilege to go through the high profile of today's combination, those who are going to share their knowledge with our platform. First of all, I would like to welcome Dr. Surendra Pradhan sir, who is Assistant Superintendent in Madhya Pradesh government, and he has got a great information with him, as he is having a pharmacy, Ayurvedic pharmacy working and all that. So he will be having not only the administrative experience, but also having a great experience of drugs manufacturing as well as the Ayurvedic pathy is concerned. So welcome, sir. And our second speaker, I still wait that he might be joining, or he has joined with other some name. The proper name is not there in our list. Dr. Dinesh Ravas. He's assistant professor, and especially he is IITian from BHU, and he belongs to the engineering and technology. So definitely he will be in position to inform us all with his distinguished lecture that in what way the machines which are used for making the tablets and Ayurvedic preparations in a good form, presentable form, to be attracted by the purchasers and the use for its benefits and useful. So I also welcome him. Again, I've got a very important guest, Dr. Shija Ali V from Belgavi, and she is also going to give some information, as she is belonging to the products of our preparation. We welcome in our platform, in our webinar,
our most revered person who is just going to join for the first time to our webinar is Professor Kaushal Kumarji. He's professor there in Birsa Agriculture University, and he has got a great credentials on his name, and he has chalked out so many research work, and presently he is dealing with some of the preparation based on this giloy. So definitely we are going to learn a lot from his address, along with our one of the beloved friend and student and friend, Dr. Avnish Upadhyay, who is Sir. here. Pardon? Pranam, sir, pranam. Please, thank you, Krishna. So he is very much with us, and he is at present he is posted here in our Rishikul Ayurvedic Pharmacy, which is having a great history, say more than 50 years or so. Of course, he is having a great association with the Patanjali Divya Pharmacy as a research worker, as a physician, as a product supervisor, manager, and he also did PhD. So he is going to inform us a lot of informations regarding this whole work, and also we are expecting a lot from him, as he has been a very close with the newer machines installed there in Divya Ayurvedic Pharmacy for tableting and for all the mixing, preparation, everything. So it will be a great evening today, as our great speakers are very much here and they are full of knowledge. So from my side and from the side of our IRES with whole team, we all welcome, along with our great scholars and dignitaries who had been regularly joining, like our especially Mohsen Delvi ji, Professor Vishnupriya Das Mohanty ji, our other Dr. Anjali, she is pharmacy manager, along with our Pramod Shah ji, our Tashrif Khan ji, Jay Vaidya Jayesh Thakkar ji. So it will be a great assembly on today's webinar. So with all these words, we welcome by heart, and we do hope that we'll be going to benefit it with the sectors of all information, as the topic is very important. The topic is very unique. That is tablet, bati and gutika, advanced manufacturing with the quality control. So as we know, before the invention of these machines, all the work was done by hands manually. It may be Arovartnivati, it may be Chandravati, it may be any preparation by our old Vaidyas. So very naturally now the weight, especially if it is 125 mg, it is common. So from the side of its weight and all similarity, equality, shape, size, everything will be now well invented and well shaped. So this is all we are going to learn from it. And as we know, this all fall under the heading of the Panchvid Kashaya Kalpana. Whatever is feasible to the user, to the patient, that's why we have got so many preparations. So with these words, I welcome all our distinguished guest speakers, along with our the dignitaries who have joined the platform and who will join and who will visit our not only YouTube but also the archive from the library. Thank you so much, and over to Pawan Sharma. Thank you. On behalf of industry, I would like to welcome respected Pramod Sharma ji, Managing Director, Vaidyanath Patna, respected Mohta ji from Hathras, and all other industry persons who have joined us today and who will be visiting us on YouTube also. So thank you, sir. Thank you very much. Welcome, sir. So now I would like to request our first speaker, my senior, Dr. Surendra Pradhan ji from Gwalior Ayurvedic Government Ayurvedic Pharmacy. Welcome, Pradhan sir. थैंक यू डॉक्टर शर्मा जी और अग्निहोत्री सर जी। आज का ये विषय, जैसा सभी लोग जानते हैं कि ये बात आती है सामने कि आयुर्वेद में जो भी गुटी बटिका टैबलेट बनाई जाती थी, उनका पहले का जो स्केल है वो वैसज्य कल्पना के अनुसार वैद्यक स्तर पर रहा।
समय की मांग ऐसी रही कि उसके बाद में हम लोग अपने इस यात्रा को आगे ले जाते हुए और एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आगे आए। अभी जैसे कहा भी गया कि टेबलेट एक वैसा प्रोडक्ट है जो एलोपैथिक के प्रोडक्ट से बहुत अधिक सिमिलरिटी रखता है। सब लोग जानते हैं कि हमारे आयुर्वेद के इस प्रोडक्ट को प्रेजेंटेबल बनाने में आयुर्वेद का या आयुष विभाग का या आयुष की पैथी को पब्लिक में एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ाने में बहुत बड़ा रोल रहा। एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी अगर मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग उपयोग करते हैं तो ऐसा पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं पहले की अपेक्षा हम लोग क्वांटिटी वाइज, क्वालिटी वाइज, प्रेजेंटेबल वाइज इन चीजों को बहुत अच्छे से अच्छे लेवल पर कर पा रहे हैं। ये देखा जा रहा है कि ये जो दवाई है इसको अगर टैबलेट फॉर्म में हम ले जाते हैं तो पंचविध कसाय कल्पना से कहीं और अच्छी स्थिति में हम पब्लिक के बीच में पहुंचा पा रहे। ये हमारी एक जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है आयुष की, उसने इस चीज को पहचाना है, देखा है, और जो खरली रसायन की स्थिति हुआ करती थी या खरली लेवल पर हम लोग गुटी बटिका बनाते थे, आज उसको मशीनों का उपयोग करके बिल्कुल अच्छी स्थिति में बहुत अच्छे ढंग से और अच्छे ढंग से प्रेजेंट करते हुए मार्केट में ला पा रहे हैं। यही कारण है कि जिस चीज को सबसे बड़ी कमी होती है टेबलेट में, मैं सभी लोगों की जानकारी के लिए, चूंकि फार्मेसी से 30 साल से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैंने देखा है कि टैबलेट गुटी बटिका को अपने प्रोडक्शन से कई बार लोग वाग इसलिए दूर रखने की कोशिश करते हैं कि ये टाइम बहुत लेती है। सबको मालूम है, पहले हैंड बाई अभी बताया सर ने भी कि पहले हम लोग हाथ से बनाते थे और यही हाथ की यात्रा हमारी मशीनों में कन्वर्ट हुई। मशीनों से हमारे उपयोग करने के बाद में हमको क्या मिलने लगा? एक तो उनका सेफ और साइज, जैसे मात्रा में बोला ना कि मात्रा 125 मिलीग्राम यानी 125 मिलीग्राम। हाथ वाली में या पहले जो हम लोग प्रयास करते थे उसमें इस मात्रा में वेरिएशन रहता था और वो हमारे वैद्यक परंपरा में जो उपयोग मात्रा का होता था उसका निर्धारण वैद्यों के द्वारा निकट दृष्टि रखते हुए की जाती। लेकिन आज जैसा एलोपैथिक में होता है कि वो 5 मिलीग्राम का वेरिएशन रखते हुए बिल्कुल उतना ही हम लोग जो है ना मात्रा के रूप में टेबलेट और गुटी बटिका को ला रहे हैं। एक चीज देखने में आती है, जो कंप्रेसिंग मशीन की चर्चा आ रही थी, वैसे तो आप सब लोग जानते हैं, सभी लोग आयुर्वेद से या मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हुए हैं कि टैबलेट बनाने की जो यात्रा है वो चूर्ण तक तो समान रहती है सभी जगह। चूर्ण बनाने तक सारी ड्रग की साफ सफाई और उसके बाद में डिसइंटीग्रेट करके और उसको बारीक शींग से पीस के छान करके मिक्स करके जहाँ पाउडर फॉर्म बन गया, उसके बाद में लिक्विड की बात आती है कि अब उसमें लिक्विड मिला करके और उसके अंदर वो लोच पैदा करना है जिससे वो मशीनों के अंदर या तो बटी बनाने में काम आ जाए, बटी कटिंग में काम आ जाए, और या वो अन्य प्रकार से जो कंप्रेसिंग, अगर टेबलेट फॉर्म की तरफ जाते हैं तो अपन कंप्रेसिंग में जाते हैं। ये चीजें मशीनों के प्रयोग से बहुत आसान हुई हैं। लोग आज सभी फार्मेसियां इसका प्रयोग भी कर रहे हैं। कई बार ये देखने में आता है कि टेबलेट के गुटी बटिका के विषय में ये व्यवहार में मैंने पाया है कि इसका जो डिसइंटीग्रेशन टाइम है वो डिफरेंट रहता है। जबकि वो ड्रग अगर शास्त्रोक्त विधि से बनाई गई है, शास्त्रों में उल्लेख फॉर्मुलेशन से बनाई गई है, तो फिर उसका डिसइंटीग्रेशन टाइम अलग नहीं होना चाहिए। लेकिन मशीनों की उपयोगिता की जो विभिन्नता है, लोगों के द्वारा अलग अलग पैरामीटर्स कई बार जो है ना वो भिन्न भिन्न अपनाए जाते हैं। या तो ज्यादा घुटाई हो जाती है या ज्यादा कंप्रेशन हो जाता है। यही कारण है कि वही गुग्गुल की बटी कई बार आप लोग तोड़े से भी नहीं टूटती। ये बड़े व्यवहार की बातें हैं जो आई हैं, सामने भी आई हैं। अभी कोरोना काल में आपने देखा कि जो अपन संजीवनी जो अपन ने ये जो गिलोय की बटी दी, आज सनसनी बटी जब पहुंची है मरीजों तक, वो चूर्ण हो गई बनाने की पद्धति की भिन्नता की वजह से। और यही चीज बहुत अच्छे से बनाई हुई है, मशीनों का एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ बनाई हुई है, तो उसने पूरा अपना समय रखा है। खाने में एक ड्रग जो टैबलेट फॉर्म में है, गुटी बटिका के फॉर्म में है, अगर खाने के बाद में कितनी बार डिसइंटीग्रेट करेगी बॉडी में,
ये हमारी बनाने की पद्धति पर निर्भर करता है। तो ये पाया जा रहा है कि कुछ चीजें बहुत कठोर बन जाती हैं और कुछ इतनी होती है, जैसे मैंने अभी बताया कि गिलोय की बटी पहुंचते पहुंचते उससे पहले ही चूर्ण हो गई, पाउडर फॉर्म में मिली लोगों को, जब हमने उन लोगों को खोल करके बांटने के लिए पाया। ये चीजें हम लोगों ने पहले शास्त्र में से भी जो अध्ययन किया और आधुनिक विज्ञान की जो मशीनें आज आई हैं उससे हमने प्रयोग में सीखा है कि अब हम उन्हीं चीजों को, वही चीजें जो हमको बहुत कम मात्रा में बनाने पर भी कठिनाई होती थी, आज अधिक बहुत बहुत अधिक मात्रा में हम लोग बना पा रहे हैं। सभी लोगों ने उस ज्ञान का उपयोग पूरी जो आधुनिक पद्धति से आई हुई मशीनें हैं, चाहे वो पीसने वाली हो, मिक्सर के रूप में हो, बॉल मिल के रूप में हो, या आपका वजन लेप के जो एक्चुअल में एक्यूरेट वजन के साथ बनाने वाली दवाई, ये कमियां हमारी इन जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी से वो निश्चित तो दूर हुई। ये बहुत ही फ्रूटफुल है आयुर्वेद को, आयुष को पब्लिक की निगाह में अप टू मार्क बनाए रखना। ये एक वही प्रोडक्ट है जिसके लिए लेने में भी मरीज को बहुत अच्छा लगता है, उसे भी वही फीलिंग होती है कि वो हाँ बहुत अच्छा प्रोडक्ट यूज कर रहा है, मात्रा प्रॉपर पहुंचती है, पैलेटेबिलिटी, एडमिसिबिलिटी जो पब्लिक में है वो टेबलेट और गुटी बटिका के रूप में ज्यादा पाई जाती है। अब लवंगादी बटी के रूप में भी हमने एक चीज को पाया कि कई लवंगादी बटी आपने खाई और कुछ ही देर में मुंह में चूरा हो गई, जबकि वो चूसने के लिए है। एक गोली को जितनी देर तक सलाइवा में वो रहेगी उतनी देर तक खांसी का प्रभाव उसमें पाया जाता है। ये बनाने की डिफरेंशिएट की से एक वही टैबलेट एक फर्म की आ रही है, वो मुंह में खाते ही चूरा हो जाती है, और एक बटी टैबलेट एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे तक चलती है, दो घंटे तक चलती है। तो जो 2 घंटे तक चल रही है खांसी में उसका प्रभाव ज्यादा पाया जा रहा है वनस्पति का, क्योंकि चूर्ण के रूप में तो खाने का कुछ है नहीं है। खांसी को तो रोकने के लिए आप जितनी देर तक मुंह में रखेंगे उतनी देर तक खांसी दबी रहती है। ये एक एग्जाम्पल दिया हमने। ऐसे ही कुछ चीजें पाई जा रही हैं आजकल के एक्ट्रैक्ट के रूप में भी हम लोग कुछ टेबलेट बनाते हैं। वैद्यों के द्वारा इस तरह का सजेशन मरीजों को दिया जाता है कि भाई ये गोली आपको मुंह में चबा करके और फिर खानी है, और एक गोली आप लेंगे, बोले नहीं आपको सीधे निकल जाएगी। ये वही डिसइंटीग्रेशन टाइम जो है ना वो आपको शो करता है कि नहीं, जो चबा करके जो बताया जा रहा है निश्चित तौर पर कई बार वो गोली सीधे एलिमेंट्री कैनाल को पार करते हुए और आखिरी में निकल ही जाती है। उसका इतना हार्ड बनी हुई रहती है कि वो बॉडी में डिसॉल्व ही नहीं। ये टैबलेट मशीनें बनाने में जो चीजें पाई जा रही हैं, जो मशीनों का उपयोग हो रहा है और जिस चीज का प्रयोग करके हम इस इंडस्ट्री को आगे तक ले जा रहे हैं, इस पैथी का भला कर रहे हैं, ये निश्चित तौर पे वरदान है हम लोगों के द्वारा। आज पूरी आधुनिक चिकित्सा पद्धति, आधुनिक वैज्ञानिक ज्ञान का जो उपयोग आयुष के फेवर में किया गया, निश्चित तौर पर वो हमारे लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहने वाला है, हमारी इंडस्ट्री को बहुत आगे तक ले जाने वाला है। आज का जो विषय है, ये विषय इससे जुड़े हुई आज फैटर्निटी में हम लोग बैठे हुए हैं। बहुत सारे लोगों ने, क्योंकि बहुत जो फार्मेसी से जुड़े हुए लोग हैं उनको तो नित्य नए अनुभव सामने देखने को मिलते ही, लेकिन हाँ R&D से जुड़े लोग भी हैं, इसमें फैकल्टी के लिए जुड़े हुए लोग भी हैं। और अगर देखें तो क्वालिटी कंट्रोल वाली बात जो आती है, तो क्वालिटी कंट्रोल आज की एक एक बहुत ही जरूरी चीज है। उसके बिना हम किसी प्रोडक्ट की कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसे हालातों में क्वालिटी कंट्रोल से जुड़े हुए लोग, फार्मेसी से जुड़े हुए लोग और फैकल्टी से जो सिखाने की मादा रखते हैं, और साथ में इस बिजनेस वर्ल्ड में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से जुड़े हुए लोग, सब लोग आज इससे जुड़े हुए हैं। विषय बहुत ही उपयोगी है। हम समझते हैं कि ये विषय जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा, इस विषय पर बहुत ही अच्छा ज्ञान हम सब लोग आपस में शेयर करेंगे। इस विषय के लिए आज जो विषय रखा, मेरे को बोलने का जो मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। Thank you, Dr. Pradhan. Thank you very much. Excellent. I have passed, as you also know, I have passed 33 years in Imami R&D, developed a range of tablet there, and today also wanted to present as Dinesh Rawat ji
was not there initially, and then Avnish ji is now coming. So I would like to communicate my thanks to the speakers and invite Dr. Dinesh Rawat from BHU. He informed me yesterday regarding crystal engineering. That will be also a new subject. So I assure him that we will conduct a webinar on crystal engineering also. He is the professor in pharmaceutical engineering and technology, IIT BHU. So we would like to listen. We are eager to listen technical facts from him. In the last, if time remains, I would like to communicate my experiences. Dr. Dinesh Rawat ji. Welcome, welcome. Your screen is visible, but you are not audible and visible. Yeah, am I audible now? Thank you very much. Yes, loud and clear. Welcome. Just a moment. And is my screen visible to everyone? Yes, yes. Okay. Very nice. First of all, thank you very much, Pawanji. Like it's a kind of very interesting meeting going on, and like I might be the kind of the person who is having the least information about the Ayurvedic product and the manufacturing, and so I'm more in kind of in the commercial pharma manufacturing and in the R&D. So I will try to give my insight, like what we do in the pharma manufacturing, and what are the advancements, and what will be the scenario in next 10 years or 20 years. I will give you a few examples, what are the most advanced techniques all these kind of big pharma they are using. So it might be a great template, for our local manufacturers, where things are going. So maybe they should start kind of following those things, and we have to be leader in that. Okay, so we are already leader in manufacturing of the generic medicines, but we have to be leader in kind of our local products, the Ayurvedic products. They are supposed to go throughout the world in next 5 or 10 years. The growth we are seeing in the Ayurvedic products is kind of it's immense, and I think what I felt is like our manufacturing capacity for Ayurvedic product, and it's not up to that level, and the market potential is huge. So we have to cover up a lot for that. So with that theme in my mind, I will try to give a brief about the tablet manufacturing, and then I will go slightly towards the kind of advanced manufacturing, and along with that I will give some kind of the information about the quality control as well. So for the tablets, as our sir already described by that, like the tablets, they are manufactured by 3 techniques generally: the wet granulation, dry granulation, and then direct compression. Okay. And wet granulation and dry granulation, they are kind of the most commonly used. Okay. But the wet granulation, sometimes our kind of the main medicine, it's susceptible for hydrolysis. It degrades if it's mixed with water. Okay, so in those kind of things we have to avoid the wet granulation. For that purpose we have to opt for the dry granulation. Okay. And but if we add all this wet granulation and dry granulation, we increase the kind of the manufacturing time, and a lot of equipment are involved as well. So these days, what's happening, like the major pharma, they are trying to go for direct compression, just to avoid the wet granulation and dry granulation. So the purpose for all this granulation was like our material is not directly compressible. So what's happening now, they are trying to make
the material in such a way that it's directly compressible and we get tablets without doing the granulation. Okay, so there are different steps. The unit, we call them unit processes. Like for an API, first is the crystallization. Okay, so you develop the crystal. So you generate the API by chemical process. Then the pharmaceutical company, they receive it, and inside the manufacturing, they weigh it, they mill. So purpose of milling is like to reduce the particle size, and along with that, not only to reduce the particle size, to make it uniform particle size. Maybe we are reducing the particle size, but there might be variation. So we have to make it a uniform particle size. The D10, D50, and the D90 values, these are the three values which are kind of observed to make the crystals for uniform size. So by milling, we try to control that particle size distribution as well. And then we do the mixing, granulation, drying, and compaction. They're part of tabletable. Then we do the coating and packaging. Coating is generally it's like some medicines, they are susceptible. They in our stomach, the environment is acidic. For example, the earlier penicillin drug. So those kind of drugs, they get degraded in the stomach. So to avoid the degradation, we coat them. We do the enteric coating so that those tablets they stay alive in the acidic environment, and then they move to GIT, and in intestine we have kind of less acidic, or we can say alkaline. There these tablets get dissolved and then the absorption happens. Then regardless of the method used, like in dry granulation, wet granulation, and direct compression, most of the things are same, like the crystallization, milling, and mixing, they are same. Only difference is the dry part. In dry granulation, we avoid the wet granulation completely. And in direct compression, we avoid granulation at all. So what are the purpose for the tablet? To withstand the mechanical shock. Okay, like during this manufacturing, during the packing, during the shipping, as sir was discussing, like sometimes instead of the tablet form, they receive just like the powder, churn. Okay, so tablets should be of that strength that they can withstand the the transportation. Okay, tablets should be uniform in weight. Okay, and that's controlled statistically. Like for example, if we are making 10,000 tablets, we will do test on 100 tablets. Okay, and then we will see like if the weight is uniform or not. And if the weight is not uniform in that particular statistical range, then that whole batch is rejected. Okay, because along with weight, the drug concentration inside the tablet will vary as well. Okay, for example, in 200 milligram tablet, if the API is 50 milligram, but if the weight of tablet itself is 180, so that means the weight of API will decrease there as well. So and to formulate tablet that are chemically and physically stable over a long period of time. Sometimes patient a medicine, sometimes it takes like more than 1 year for the user. Okay, so a company, it manufactured it, then maybe after 2 months it reached to the pharmacy shelf. Okay, so then maybe in 2 months the pharmacist it sold to the patient. Okay, then patient will take another 2 or 3 months to use it. Okay? So there is a kind of a time, and for that particular time duration, the tablet should retain its elegance, okay, its identity, and there should not be any tablet defect. Because if you see any tablet defect, if you see chipping, so patient will think like this tablet is not of good quality. So most of the time they throw it as well. They don't use it at all. So for our product, the Ayurvedic product, like it's very good. Like we have to focus on the elegance as well.
elegance of the tablet. The tablet should be free from the tablet defects. So these are all the kind of equipments we use in pharmaceutical manufacturing. And the size reduction equipment, sometimes if there's size reduction in the micron range, we call it micronization as well. Then the proper weighing balance, they should be calibrated. Sometimes the weighing balance don't give you the exact value, so that's why they should be routinely calibrated. The mixing equipment, mixing is very important for the tablet kind of, the content variation. If the mixing is not done properly, that means the tablet might be of the same weight, but the main content, the therapeutic content might not be same in those tablets. So mixing is very important, and mixing becomes more important if the dose is very less. Okay, so if the dose is like if the drug is potent, that means it's effective in low concentration. So in that particular case, we have to make sure that all the tablets have the kind of the ideal dose strength. Okay, then we have the granulators, we have the drying equipments, the tableting machine, the quality control equipment, the coating, packaging, and in all these 9 areas there are further advancements. Okay, so major companies, they are trying to automate them, trying to link one to another. You must have heard the buzzword these days, AI and ML, artificial intelligence and machine learning. I will discuss in upcoming slide a little bit about that as well. So AI and ML, they are kind of becoming part of the pharmaceutical manufacturing these days. This is happening in the big top 10 pharmaceutical companies. So about the granulation, if you see, we have the direct compression here, we have the dry compression here, and the wet granulation here. So what happens? I will just go through the most complicated one. It's the wet granulation, because liquid is involved. Okay? And as liquid is involved, that means wherever liquid is involved, there are chances for the microbial contamination. Okay? So if you don't use a pure water for 3 days, you will see if you analyze that by LCMS or HPLC, you will see the water purity is going down. There is fungal growth which is not visible with the naked eyes. Okay. So like wherever liquid is involved, there are chances for the microbial contamination, and that's why like the wet granulation is kind of not at advantage. And in the liquid medium, sometimes the kind of if a drug is kind of susceptible to hydrolysis, so we have to avoid the liquid medium. So in wet granulation, the drug diluent, we have to mix them. We have to use the wetting agent, the binder binder which keeps the tablet or the granules together. Then we make the granule, we dry them, we sieve them to make them uniform particle size. Then we mix with the disintegrant. Like as sir was discussing, too hard. They find the tablets too hard. So we have to use the proper disintegrant so that tablets should disintegrate when it reaches to the stomach. We have to use the glidant and lubricant for the kind of the manufacturing, for improving the flow and to reduce the friction. So that's the wet granulation, which is kind of most commonly used for the tablet manufacturing. Then we have the dry granulation. In dry granulation, the wetting for granulation is totally avoided. In that, first we mix the drug with diluent and the lubricant. Diluents are the bulking up agent. Like for example, in paracetamol tablet, we have a tablet of 500 milligram, but in that paracetamol is just 200 milligram. So around like more than 280 milligram is the diluent in that. We have to mix them, compress, combination, that means the milling, we have to screen, sieving. Then we have to mix with the disintegrant. Okay. Then we have to compression mix, and then proper tableting.
And in if you go direct compression, it seems too simple. Okay, and it's the kind of least used method, direct compression, because in direct compression we have to avoid the granulation completely, and it's very difficult to compress the material without making the granules. Okay, but these days what's happening, the companies, they are trying to make the material in such a way, they spray dry the API. Okay, they use the hot melt extrusion method to make the API in such a way that they can easily make the tablet by just the direct compression. And that we are simply mixing, and then we are doing the compression directly. And so it's the easiest, it's the fastest way, but it's not suitable for all the materials. So they try to change the material properties to make them ideal for the direct compression. So direct compression is the kind of the futuristic. So the quality control test for tablet, it's the systemic determination of physical, how strong is the tablet, what are the constituents, the chemical, all the like the kind of content uniformity of the main material, the mechanical tablets, it's kind of strong enough to withstand the transportation process. Okay, but it's also weak enough so that it disintegrates when it's required in body. The biological property, the microbiological property of tablet, all these things, they are, they are part of quality control test, just to improve the quality of the product. And there are pharmacopoeia standards like British pharmacopoeia, United States pharmacopoeia, European pharmacopoeia, Indian pharmacopoeia, Japanese pharmacopoeia, and then there is a kind of ICS guidelines as well. ICS, International Conference of Harmonization. In that, particularly all these big three, the USP, the US FDA, and the European Medicine Agency, and the Japanese one. These three, they came together and they make guidelines, which is ideal for all the pharmaceutical manufacturing. So the purpose is to design the perfect tablets and later monitor tablet production quality. So they are essential now. And then there are rules. So they are kind of statistical control. If the weight variation goes more than 10 or 15%, they vary according to the tablet weight. So the whole batch is rejected. So if we follow that process, that means the quality is inbuilt. So if the quality is inbuilt, that means then we are able to do the kind of, the large scale manufacturing. If we are planning for large scale manufacturing, inbuilt quality is the foremost important thing. So for tablet, like the official tests, they are the content uniformity. We have to check if the tablets, the content, the main API is there in the required quantity. The weight variation, the tablet should not vary too much. There is a percentage allowed for that, but they should not vary too much, because if the weight is varying, that means the therapeutic content inside the tablet is varying. That means the patient who is not getting the required quantity of the therapeutic material. The dissolution testing is very important as well. So in dissolution, it varies like according to the type of the tablet. Okay, like sometimes there are tablets which are supposed to show 100% dissolution in 2 hours. Then there are tablets who are supposed to show maybe 50% dissolution in 6 hours. So the dissolution test requirement vary along with the product. So and product vary according to the requirement. Then there is a disintegration time testing as well, if the tablet is disintegrating properly or not. Like it varied for the chewing tablet, they should not disintegrate. Okay, and for the oral tablet, generally disintegration should be done in 15 minutes. Then there are non-official tests, hardness testing and the friability testing. They are non-official, but they are indirectly kind of decide the disintegration and dissolution.
If a tablet is too hard, it will be very hard to disintegrate, and it will show poor resolution as well. If the friability testing, if tablet is too friable, that means tablet is not of good quality. It will show chipping. It will become powder very easily. So these tests, they should be followed as well, and these are very important for the hardness testing is very important for like the direct compression, direct compressible tablet as well. These are like we try to correlate the material properties along to the hardness testing. So there is a lot of advancement in the pharmaceutical manufacturing these days. So there is a one thing which is going on only in a few countries, and in few countries as well, just in a few labs. But that's the future next 10 or 15 years. So if you see this slide, it's the continuous manufacturing slide. Okay, so on the RHS, you will see a continuous crystallization. So, and that continuous crystallization is happening inside the vessel. Chemical reaction happens in this vessel as well, and crystallization is happening in this vessel as well. If you go to a API manufacturing site, you will see material is moving from one reactor to another. So it takes like 4 or 5 containers for that. Okay, so that's the kind of batch processing, batch crystallization. But in continuous crystallization, everything happens in one reactor. Even filtration happens along with that. And how that is controlled? Because of the PAT tools, process analytical technology tools. So it's not like we are taking the sample, we are going to the lab, and then we are checking how is the quality. In PAT tools, process analytical technology tools, we see everything live, what's happening inside the vessel. By NIR, we see if the reaction is complete or not. Okay. By PVM, we see how good are the particles, what is the shape of the particles. With the FBRM focused reflectance measurement, we see what's the particle size, distribution. With Raman, we see like if the reaction is complete or not, or if there is something else is happening inside the vessel. So these are the live tools: NIR, PVM, FBRM, and Raman. PAT tools, we call them PAT tools. They are very important for the continuous manufacturing. And after that, this API from this vessel, it goes to the feeding, where it get mixed with the mixed with the excipients. It goes blending, and then belt conveyor and directly to the tablet machine. And from there, you get the final product. So you see NIR probe here as well. So these probes, the PAT tools, they are on the whole train. We call it train, or the chain of the processes. And from one end, you are giving, you are putting your raw materials. On another end, you are getting your final dosage form. So that's the continuous manufacturing, and it's going to replace everything next 15 or 20 years throughout the world. So we have to be ready for that. If we are planning to move on mass scale, then this is the way to go for. Okay. Now, just give. I want to give a brief information about the artificial intelligence. What's happening in the big pharma companies. So these are the kind of top 8 pharma companies. Okay. What they are doing, they are investing heavily in the artificial intelligence and in the machine learning, and they are very important to make the whole process in a continuous way, for the continuous manufacturing. Like the MIT, they are partnering with the Novartis and Pfizer to change the discovery process. The GSK, they use the AI intelligence for the COVID-19 discovery. Roche, they are doing that. Abbott, they are doing that. Now the industry 4.0. So if you see, like the steam engines when they came in the 19th century, that was the first industrial revolution.
Then after that, we got the mass production or assembly line around 1940s or 1950s. Okay, that was the second industrial revolution. Then computer and automation came in 90s and 2000s. But now, if you see, the second and third computer and automation came in the mass production, but in the fourth industrial revolution, we are seeing a combination of cyber physical system. We call it CPS as well. Again, in the Germany, they coined this term Industry 4.0, and they have a national strategy to promote the computerization of the manufacturing. Why? Because if someone has to produce at a mass scale for the whole world, that's the way to go for it. And if someone do the computerization of manufacturing first, they will be able to cover the whole market. Okay, so this is very important for our products as well, like the Ayurvedic products, our kind of the traditional medicines. People are now more aware about them. So we should not focus only our kind of the Indian consumers. We should focus all over the world. Demand is going to skyrocket definitely in coming years. So we have to be ready for this kind of the technological revolution. So India is like very well positioned to that because of our IT industry, because of the advancement in pharmaceutical industry, and like our traditional medicine industry should go along with that as much as well. So this slide is just showing how those PET tools, they are covering the whole process, the feeding tank pad, the wet granulation pad, the fluid bed dryer pad, the milling pad, mixing, compression, coating. So the whole process is kind of the real time control with the networks. All the information is kind of passing from one to another, and if there is any problem in the whole process anywhere, it will try to auto correct as well. Okay, if tablet variation, if tablet hardness, if there is some problem, what the machine will decide. Okay, how much disintegrant should be added, what should be the pressure during the tableting. So on the basis of hardness, it will change the compositions in the process. So that's the real artificial intelligence. So just in the world, like where it's happening. Okay, so industry 4.2 it's already started in US. Now the Europe and Australia, they are really putting too much investment on that. China, they are putting investment. Indian government, they are already putting investment as well. And because of our advantage in IT and pharma industry, we are well ready for that. Okay, so thank you very much, and session is open for the questions, please. Thank you. Thank you very much, Doctor. Very brief, concise, and to the point. Excellent. Excellent, Doctor. Thank you. Thank you very much. Kindly stop sharing. Okay. Excellent presentation. Very short and very niche. Beautiful. Thank you. So now I would like to request our fourth speaker, Dr. Avnish Upadhyay ji. He is from Haridwar in State Ayurved Pharmacy. Welcome, Dr. Avnish. Welcome. I would like to request Professor V.K. Agnihotri sir to introduce him. Welcome. Thank you, Dr. Thank you, Dr. Pawan Sharma ji. It's a pleasure to introduce Dr. Avnish Kumar Upadhyay, who is here as a project manager here in Vishnu State Ayurvedic Pharmacy, Haridwar. And he has got a great experience right from Patanjali Div Pharmacy under the section of research and technologies, quality control, right from the raw ingredients to all the processing of the tablets and preparations through the updated machines
which were imported from Kenya and China, and so many upgraded machinery tools are there. And Dr. Avnish Upadhyay is not only having that much experience, but also having the food park Padartha section. And that unit was also been well observed and supervised. So we are interested, and we would like to love the information he is going to present on today evening. And it's our pleasure to appreciate him and to listen him. We welcome and we invite Dr. Avnish Upadhyay to join this platform and proceed with his presentation. Thank you. थैंक यू सर, बहुत बहुत आभार। और आज के इस कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजर डॉक्टर शर्मा सर और हमारे गुरु जो शिक्षक भी रहे हैं, और जब हमने कार्य स्टार्ट किया तब भी सर के ही रेफरेंस से हमें वो मौका मिल पाया जो अन्य लोगों को नहीं मिलता है। आचार्य जी के माइंड में जो पहला इम्प्रेशन डाला था वो हमारे पूज्य गुरुदेव जी ने ही डाला था। उसी के बाद पतंजलि दिव्य फार्मेसी जो हुआ करता था पहले, दिव्य फार्मेसी में अपार्ट फ्रॉम क्लिनिकल वर्क जो रिसर्च का, मैन्युफैक्चरिंग का और प्रोजेक्ट्स का मौका मिला, वो सर के ही बदौलत मिला। और उसके लिए मैं सर का बहुत बहुत आभार करता हूँ। और सर की वजह से ही बहुत उस समय के ज्ञानी लोग डॉक्टर विश्वजीत मुखर्जी और डॉक्टर बीडी शर्मा हुआ करते थे, उनके साथ कार्य करने का मौका मिला। और सर ने हमेशा आगे बढ़कर उसके लिए सहयोग किया, इसके लिए मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और आज का जो टॉपिक है क्वालिटी आयुर्वेदिक ड्रग मैन्युफैक्चरिंग। Kindly excuse me for interruption. I would like to request all co-hosts to mute all audience, please, because it is disturbing. Devsan Pharma, kindly mute your mic. Devsan Pharma, kindly mute your mic. And every co-host can mute. Right. Sorry for interruption. Please continue. थैंक यू सर। तो मुझसे पहले जो स्पीकर थे तो उन्होंने बहुत कुछ, डॉक्टर दिनेश ने टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बहुत कुछ बता दिया है। तो लेकिन आयुर्वेद की ड्रग मैन्युफैक्चरिंग और एलोपैथ की ड्रग मैन्युफैक्चरिंग में मूलभूत डिफरेंस है। किसी भी चिकित्सा पद्धति की सफलता के पीछे सबसे मूल जो वस्तु होता है वह मेडिसिन होती है, औषधि होती है। और औषधि द्रव्य की कार्बुकता यानी इफिकेसी से ही हम किसी चिकित्सा पद्धति को आगे बढ़ा सकते हैं और उसके प्रति लोगों का फेथ डेवलप कर सकते हैं। आयुर्वेद में पंचविध कषाय कल्पना का वर्णन है। हम अगर वैदिक लिटरेचर में देखें तो वैदिक लिटरेचर में भी हमको बटी का रेफरेंस मिलता है, उसमें भी मोदक का और मणि नाम से वर्णन मिलता है। और फिर उसके बाद आयुर्वेदिक लिटरेचर्स में औषधि कल्पनाओं की बात, उनकी कार्बुकता और औषधि द्रव्यों के अनुसार ही किस प्रकार से हम पंचविध कषाय कल्पना के अनुसार औषधियों का निर्माण कर सकते हैं, इसके बारे में बताया गया। सबसे पहले आचार्य सांधर द्वारा बटी कल्पना का एक सेपरेट चैप्टर के रूप में वर्णन मिलता है। तो मूल उद्देश्य हमारा ये है किसी भी डोजेज फॉर्म को बनाने का कि वो डोज फॉर्म
कार्बुक हो यानी कि इफिकेशियस हो, इजी टू टेक हो और इजी टू डिस्पेंस हो। तो हमारी जो बट्टी कल्पना है टैबलेट फॉर्म है, उस रूप में सबसे ज्यादा सुटेबल और आज के प्रेजेंट मार्केट के हिसाब से देखें तो प्रेजेंट मार्केट में भी जो डोजेज फॉर्म्स में बट्टी का शेयर है, टैबलेट का शेयर है, वो सबसे ज्यादा है। जैसा कि डॉक्टर दिनेश सर ने बताया कि बट्टी बनाने के लिए सबसे पहले आवश्यक जो होता है वो हमारा रॉ मटेरियल You होता can है। share your PPT also, sir. यस You सर। can share your PPT. Agnihotri sir, kindly guide. He is doing. Dr. Avnish, you please start your presentation, which Yes, you sir, made. I am trying. Okay. Doctor, you can ask Dr. Ruchita. She will help you. With other instruments, she can help you. With other device. Yes. Yes. Yes, carry on. Dr. Avnish, is there any problem? सर हो नहीं पा रहा है इसमें अभी शेयर। Send your stuff to Dr. Sharmaji's WhatsApp. He will manage from this side. As I told you earlier, आप अपना ना पीपीटी का स्टफ भेज दीजिए पवन शर्मा जी के उसमें व्हाट्सएप पर तुरंत वो चला देंगे। मैंने भेज रखा है सर को भेज रखा है पीपीटी। सर देखिए अगर आप मैनेज कर सकें तो। व्हाट्सएप पे दिया है? जी सर। सर प्रोफेसर पवन शर्मा जी देखिए इनका व्हाट्सएप पे आया कर हुआ रहा हूँ सर, तब तक कंटिन्यू चालू रखिए सर। हाँ डॉक्टर अवनीश आप चालू रखिए। जी सर जी। तो टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो प्रोसेस है डॉक्टर दिनेश ने भी बताया 3 तरह के प्रोसेस होते हैं। पहला होता है वेट ग्रेनुलेशन, दूसरा ड्राई ग्रेनुलेशन है और तीसरा है डायरेक्ट कंप्रेशन। वेट ग्रेनुलेशन उन वस्तुओं का किया जाता है जिसमें हम पाउडर फॉर्म भस्मों के अलावा किन्हीं अन्य भावना द्रव्यों का प्रयोग करते हैं। क्वाथ आदि के साथ में लिक्विड फॉर्म में जब हम करते हैं तो इसको वेट ग्रेनुलेशन करते हैं और ये ग्रेनुलेशन जो होता है वो हमारा मिक्सर में होता है। मिक्सिंग करने के बाद उसको हम ग्रेन्यूल फॉर्म में बनाते हैं। तो ग्रेन्यूल बनाने के लिए रोटरी ड्रायर्स भी आते हैं और आजकल जो मॉडर्न आ रहे हैं वो एफबीडी आ रहे हैं, फ्लूइड बेड ड्रायर्स आ रहे हैं। फ्लूइड बेड ड्रायर्स के अंदर हम लोग उस वेट ग्रेन्यूल्स को ड्राई करते हैं और उसको ड्राई करने के बाद हम अपनी जो मेडिसिन है उसको पंचिंग सेक्शन में ले जाते हैं। पंचिंग करने के बाद हम
पंचिंग के साथ में उसका वेट का एनालिसिस करते हैं कि यूनिफॉर्मिटी हो, कि हमारे अगर जैसा कि सर ने भी बताया, अग्निहोत्री सर ने, कि डोजेज फॉर्म्स में मात्रा की, औषधि की मात्रा की बहुत उपयोगिता होती है। हम किसी भी ड्रग को अगर किसी रोगी को दे रहे हैं तो वो उस ड्रग को उतनी ही मात्रा में उतने समय में ही ले रहा है तो उसकी इफिकेसी ज्यादा होती है। तो टैबलेट फॉर्म इसके लिए बेहतर होता है। जी आ गया सर, आ गया। यस जी नाउ तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स का होना, एसओपी का होना बहुत आवश्यक है। जी सर, आप रहने दीजिएगा। ये स्लाइड से शुरू कर रहे हैं, प्लीज गाइड। जी 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 सर, वो सेकंड स्लाइड में आ जाइएगा। सेकंड, थैंक यू सर। हाँ हाँ बस, जी सर। तो मैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर की बात कर रहा था। किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का होना बहुत आवश्यक है। हम जब भी किसी भी मेडिसिन को बनाते हैं उससे पहले हम रॉ मटेरियल को प्रॉपरली इंडेंटिंग करके रॉ मटेरियल स्टोर से उसकी रॉ मटेरियल की आईपीक्यूसी करके इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल की जिस क्वालिटी की हमें रॉ मटेरियल चाहिए उस रॉ मटेरियल को सबसे पहले हम इंडेंटिंग करके अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन में ले जाते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में अगर हमारा रॉ मटेरियल पाउडर फॉर्म में बनाना है तो उसे हम पाउडर करते हैं। पाउडर के लिए हमारी पल्वराइजर मशीन्स होती हैं। पल्वराइजर में हम पाउडरिंग करके उसके बाद सिफ्टर में उसकी यूनिफॉर्मिटी बनाने के लिए उसको छानते हैं। उसको छानने के बाद फिर हम उसकी अगर वेट ग्रेनुलेशन करना है तो उसमें हम डिफरेंट टाइप के भावना द्रव्य यूज करते हैं जिनका हमें यूज करना होता है। कई बार हम डीएम वाटर का भी भावना द्रव्य के रूप में यूज करते हैं। इसके साथ में हम बाइंडर्स का भी यूज करते हैं। बाइंडर्स में गम एकेसिया स्टार्च आदि का हम प्रयोग करते हैं। और साथ के साथ में इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल चलता रहता है। अगर हम टैबलेट पंचिंग कर रहे हैं तो टैबलेट पंचिंग में हम अपने उसका वेट चेक करते हैं। अगर 250 mg का हम टैबलेट बना रहे हैं तो उसका हमारे 10 टैबलेट का रिपीटेड हम टेस्टिंग करते हैं कि वो अगर वेरिएशन 5% से डिफर करता है तो हम उस टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग को रोक देते हैं और उसके बाद पुनः हम टैबलेट प्रेस मशीन को दोबारा कैलिब्रेट करके उसका फिर मैन्युफैक्चरिंग दोबारा हम स्टार्ट करते हैं। टैबलेट पंचिंग के पश्चात, नेक्स्ट स्लाइड करें प्लीज। टैबलेट पंचिंग के बाद हमारे दो तरह के, या तो हम उसको डिब्बे में पैकिंग करते हैं या फिर ब्लिस्टर पैकिंग करते हैं। ब्लिस्टर पैकिंग के लिए ब्लिस्टरिंग मशीन्स आती हैं, ऑटोमेटिक ब्लिस्टर मशीन्स आती हैं, हम उसमें पैक करते हैं। ब्लिस्टर पैकिंग के बाद हमारी लेवलिंग का काम होता है, उसको लेवल करते हैं और फाइनल लेवलिंग के पश्चात
औषधि हमारी डिस्पेंसिंग में चली जाती हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो वेट ग्रेजुएशन की बात करें तो वेट ग्रेजुएशन की बात अभी डॉक्टर दिनेश ने इससे पहले ही बता दिया है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अपने पास है, अपने हिसाब से लगा लीजिए। तो बताने का क्या? Dr. Upadhyay ji, please continue. Dr. Upadhyay ji. Yes, sir. Next slide has been shifted. Is there any problem? Hello. Adhyay? Avnish, what is the problem? ये ब्लैक ब्लैक कैसे आ रहा है? आपका हाँ हाँ म्यूट है, आप म्यूट है, आपका स्पीकर ऑफ है, माइक ऑन करिए। ओके ओके, फिर ऑफ हो गया। Yes, sir. But presentation is not visible, sir. अग्निहोत्री जी प्रेजेंटेशन दिख रहा है? इट इज दिख रहा है, इट इज ऑन स्क्रीन। चलिए आप एक बार फिर है स्क्रीन पर। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की बात तो हम लोगों ने कर ली है। मैन्युफैक्चरिंग के साथ में स्टैंडर्डाइजेशन आयुर्वेदिक मेडिसिन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। स्टैंडर्डाइजेशन आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन, उससे हमारी आयुर्वेदिक ड्रग कितनी प्योर है, क्वालिटी कंट्रोल ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हमारा कैसा है, फिनिश्ड प्रोडक्ट की स्थिति गुड क्वालिटी की होनी चाहिए। इन सबका ध्यान रखना स्टैंडर्डाइजेशन में बहुत आवश्यक होता है। अभी जो आयुर्वेदिक ड्रग मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सारे ड्रग बहुत सारी कंपनीज बनाती हैं, तो सभी ड्रग्स में यूनिफॉर्मिटी नहीं है। हमारे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अनुसार जिस तरह से सारी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, उस तरह से हमारे सारे कंपनीज में निर्माण कार्य नहीं होते हैं। ऑडियंस से फिर आग्रह करूंगा कि कृपया अपना माइक म्यूट रखें और स्पीकर से आग्रह करूंगा कि प्लीज कंटिन्यू करें। आपकी आवाज नहीं आ रही डॉक्टर साहब? डॉक्टर उपाध्याय जी, अग्निहोत्री सर। ये आप कैसे म्यूट हो गए आप? आपकी आवाज नहीं, हाँ आपकी आवाज नहीं आ रही है। प्लीज टेक केयर सर। थिंक ही इज आउट। कुछ इनका उसकी प्रॉब्लम हो रही लगता है। आउट हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, इनका अपना ही कहीं हिल गया कनेक्शन। डॉक्टर अवनीश ज्वाइन करिए, डॉक्टर अवनीश ज्वाइन करिए।
सर कुछ कनेक्टिविटी में गड़बड़ दिखे शायद। हाँ, वो अच्छे वाले भी तो बात कर रहे। लाइन पर नहीं है सब ये एग्जैक्टली हाँ, वो अभी उनका लगता है कनेक्शन ही कटा है। रुचिता हाँ नहीं है इस समय। लाइन पे नहीं है सर। आ रहे नॉट सो फेमिलियर टू ज्वाइन। ओह अच्छा, उनका मैसेज आया कि वो जूम ट्राइंग टू कनेक्ट उनका मैसेज आ रहा है। आप दोबारा से डॉक्टर अवनीश दोबारा ज्वाइन करिए। जब तक डॉक्टर अवनीश जुड़ते हैं, हम समझते हैं हम समय का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करते हुए अगर हमारे नेक्स्ट एक बार स्पीकर उनसे सर फोन पे बात कर लीजिए ना प्लीज। हाँ नहीं, वो कह रहे हैं आई एम नॉट सो फेमिलियर टू जूम। वो दोबारा ट्राई कर रहे हैं ज्वाइन कर, उनका मैसेज आ गया है, वो ज्वाइन कर रहे हैं। वो शायद लिंक तो होगा उनके पास। खैर हाँ। तब तक हम कौशल सर को इनवाइट कर लें सर। जी 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 मैंने जी सर, नमस्कार आप लोगों को। प्रणाम सर, स्वागतम हाँ, स्वागतम। ठीक है, थैंक यू। मुझे बहुत कम समय में इसकी सूचना मिली, बट एनीवे मैं आप सभी ऑर्गेनाइजर्स को, प्रोफेसर अग्निहोत्री, प्रोफेसर शर्मा साहब, सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी डॉक्टर अवनीश बहुत अच्छे तरीके से बता रहे थे। तो माई कंसर्न इज दैट कि ये जो आयुर्वेद है, आयुर्वेद में कहा जाता है कि औषधिर नाम रूपाभ्याम जानते हैं जपा बने, अभी पाश्चैव गोपाश्च जेचाने बनचारिणा। मतलब कहने का आशय ये रहा कि औषधियों के नाम रूप तो गाय चराने वाले, भेड़ चराने वाले, बकरी चराने वाले भी जानते हैं, लेकिन जो उसका सही रूप से उपयोग कर सके वही असल में वैद्य है, राज वैद्य है। और लोगों को ये समझना चाहिए कि देवता लोग भी बीमार होते हैं, क्योंकि उनकी चिकित्सा के लिए अश्विनी कुमार जो है वैद्य हैं। इसका मतलब शरीरम व्याधि मंदिरम, और शरीर रोगों का घर है, और उसकी चिकित्सा जब देवताओं की अश्विनी कुमार करते हैं तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं कोई भी हो व्यक्ति बीमार हो सकता है। अब क्या है, हमारे आयुर्वेद में जो भी परंपरा है उसके अनुसार से, जो भी परंपरा है उसके अनुसार से जो चिकित्सा पद्धति है उसका वैलिडेशन मॉडर्न के अनुरूप जो है, इट शुड बी वैलिडेटेड विद द मॉडर्न पैरामीटर बेस्ड ऑन द फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी, एंड द प्रिपरेशन इज आल्सो रेलिवेंट टू like modern medicine in the form of tablet, in the form of capsule, in the form of syrup. Whether any kind of the syrup without the ingredients of preservative, maybe methyl paraben, maybe sodium benzoate, it may not be completed. It means the such kind of preservative has never been mentioned in the Ayurveda, either for making tablet, either for making capsule, either for making syrup. In that pertinent, we can say that if gum acacia is utilized for the making tablets, or as a blender, or as a binder, or as a for the encapsulation, it means other parts rather than the material which are actually required to make preparation, maybe through the, and earlier it was the gutika and vati, with vati is in toto tablets,
Gutica is in toto capsule and the Asab and Arista is in toto syrup. It is a big question among the Ayurvedic communities. But the government of India has also allowed such kind of based on the pharmacopoeial standard. So we have to rethink whether all the pharmaceutical preparation based on the Bhesaj Ratnavali or the Ayurvedic for the Ayurvedic formulations, we have to follow like to making tablets, or we have to make the vati, we have to make the tablets as a capsule, or we make the gutika. So such kind of thing, because it is a great question, first question. Now my concern, I am working on the project sponsored by the Rashtriya Krishi Vikas Yojana for production of planting materials related for the herbal pharmacies are greatly required. So in the Jharkhand, we have already started a project for the cultivations for participation of the farmers communities. And basically I am a botanist and pharmacognosist, and also I have worked in the Dravya Guna in the PhD from Banaras Hindu University. So I am very much interested to aware about such kind of problems arises for the materials required for the preparation of the drugs. Now, one most important aspect is Giloy Sattva. So Giloy Sattva, it is not the capsule, it is not the tablet, it is not the syrup. So how it may be harvested based on the quality control, based on the pharmacognostical standard, based on the pharmacopoeial standard. So we are doing researches on the methods or to obtain the procedure for maximum yielding of the Giloy Sattva from the stem of the Giloy, that is the Amrita. And there is a lot of problem, because if you go in the example, the name of Giloy is Guduchi, means Shiva or Parvati, and it is also Amrita. So when we are going to discussion that in the based on the grammar, if you are saying Krishna, means it is the male, Krishna it means the female, then the Giloy is both two kind of it is the male or female plant. There is not, it is the separate male plants and female plants. So more of the, it is a great question, is the Giloy, their production for the Giloy Sattva, it is fully suitable by the male plant or it is by the female plant? I have got a survey among the a large number of communities of the Ayurvedic physicians, learned scholars, professors, whether the male plant is best for the Giloy or female plant is best for the Giloy to obtain Sattva. It is still a question, but as I have got in my researches, the female or Amrita, that is the best sources for the extraction of the Giloy Sattva. And the Giloy Sattva, it is now utilized for the treatment of the immunomodulator. Excuse me, Professor Kaushal ji. Yeah. Our interest of today's webinar is regarding the manufacturing of tablets, especially. Can you please add some knowledge regarding the formation of tablet in if the Satgilo is can be used? Moreover, your say student Dr. Avnish is again available to us. So Guru Shishya परंपरा में गुरु शिष्य अटक गए तो गुरु जी ने मोर्चा संभाला, तो आप अपनी बात को उस टैबलेट के फॉर्म में लेते हुए कि अवनीश जी अपनी बात पूरी कर सकेंगे. अच्छा, हाँ, अवनीश जी अभी बोल भी रहे थे. तो हमारा ये कहना है सर कि आप इसमें अनुसंधान के लिए जो गिलोय सत्व को अगर हम टेबलेट में ले जाते हैं तो उसमें जो कोटिंग करने के लिए और जो गम अकेसिया को मिलाना पड़ेगा या किसी प्रकार के कोई बाइंडर का उपयोग करना पड़ेगा. तो इस विषय में अनुसंधान करने की जरूरत है कि अगर हम गम अकेसिया बबूल के गोंद को टेबलेट बनाने के लिए गिलोय के सत्व को मिला देते हैं. गिलोय खुद ही एक स्टार्च है, गम अकेसिया जो है पॉलीसेकेराइड है.
तो हमें अनुसंधान की दिशा में गिलोय के स्वाद और गिलोय का जो गुण है, रस गुण और विपाक के साथ वो जो मैच करेगा, तो कई चीजें इसमें भी अनुसंधान की बहुत जरूरत है कि हम सबसे बड़ी बात मेरे दिमाग में यही है कि जो गुटिका और वटी का कॉन्सेप्ट है उस पर ज्यादा अनुसंधान करना चाहिए, और जो मॉडर्न की तरह टेबलेट बनाने की बजाय इस विषय में हमारा ध्यान होना चाहिए। यही मेरा सर इसमें सबमिशन है, क्योंकि अभी इसमें अनुसंधान की बहुत जरूरत है और हम पूरी की तरह मॉडर्न पैरामीटर में, मॉडर्न स्टैंडर्ड में हम टेबलेट कैप्सूल के फॉर्म में आयुर्वेदिक प्रिपरेशन बना रहे हैं, ये अच्छी बात है। और सिरप में प्रिजर्वेटिव का प्रयोग भी किया जा रहा है, लेकिन फिर भी उस जो विधा है उसको बढ़ाने की जरूरत है सर। एक्चुअली बड़ा अच्छा आपने इस चीज को उठाया कि अनुसंधान से हम आगे बढ़ाएं। दोनों, एक तो स्टार्च ही है और गम अकेशिया से उसकी कार्मुकता कम होगी या नहीं होगी, और उसका टेस्ट बहुत बिटर है, तो उस रूप में तो मैंने कैप्सूलों भर के खिलाते तो शायद पेशेंट को वो टेस्ट से बच सकेंगे। डॉक्टर दिनेश जी हमारे साथ थे, आप हो गए, और हम तीनों ही बीएचयू एलुमिनस हैं। हम जी 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 83 के एमडी है वहां से, फैकल्टी ऑफ जी सर, जी सर, आयुर्वेद जी से। सर, जी सर। और हमारे दिनेश जी भी जान रहे होंगे, उन्होंने आयुर्वेद की चर्चा की, इसीलिए की क्योंकि वो कैंपस, बीएचयू कैंपस के वातावरण में रहते हैं, तो फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद से दूर नहीं है। डॉक्टर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर अवनीश जी से मैं और एक चीज रिक्वेस्ट बताऊं करूंगा सर, कि वो एक मिनट लूंगा कि आचार्य रिव्रत शर्मा सर के सानिध्य में हम लोगों को सुनने का मौका लगा। 1997 में प्रोफेसर जेके ओझा वहाँ के डीन थे, और आप लोग को से सादर अनुरोध है कि जब समय मिले तो हमारे बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में हमारा प्रोग्राम देखने के लिए आए। 21 सितंबर को प्रधानमंत्री जी मन की बात में हमारे एलोवेरा विलेज की चर्चा भी किया था, हमारे प्रोजेक्ट से संबंधित हुआ था, और पूरा गांव की अर्थव्यवस्था उसी से संबंधित है। तो हम लोग इसमें काम कर रहे हैं। और फिर मैं कहूंगा कि टेबलेट और कैप्सूल में जो गुटिका और वटी है, वो दोनों उस फॉर्म में अभी अनुसंधान करना चाहिए हम लोग। आप ले लीजिए, आप इस प्रोजेक्ट को इसी रूप में ले लीजिए कि प्लेन सत्व गिलोय और गुटिका बनाने में अगर उसकी कार्मुकता में कमी नहीं आती तो ये काम और अनुसंधान में चार चांद लगाएगा। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। डॉक्टर अवनीश उपाध्याय जी से कहूंगा कि वो अपनी बात जहाँ पे छोड़ी थी वहां से कंटिन्यू कर लें। सर यदि आप आज्ञा दें तो कौशल सर से एक प्रार्थना करना चाहता हूँ। जी सर, जी सर, जी सर, वेलकम। आपका बिल्कुल आयुर्वेदिक ऋषि के अनुसार मन है, संस्कृत से शुरू हुआ। मैं आपको फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर, बायोडाइवर्सिटी जैसा भी आप बोलेंगे मैं आपको सुनना चाहता हूँ, डिटेल में सुनना चाहता हूँ, जिससे सबका ज्ञान वर्धन हो। अति उत्तम, अति उत्तम। नहीं सर, प्रणाम सर। आप लोग विद्वान लोग जनों के बीच कुछ समय बिताने के लिए आपने हमें इनवाइट किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू आप सर, जुड़ते रहिएगा, मैं आपको रोज भेजूंगा, जुड़ते रहिएगा। थैंक यू सर, थैंक यू, ये आपका प्लेटफॉर्म। थैंक यू सर, थैंक यू, प्रणाम। अग्निहोत्री सर, बहुत बहुत आभार सर का। हेलो, आवाज आ रही है? जी जी जी, ठीक है। जी, हाँ, तो कौशल सर के साथ तीनों पूरा मतलब गिलोय तो हम लोगों के लिए गिलोय हम लोगों के लिए बहुत सौभाग्य का विषय हो गया है। और कौशल सर के साथ मेरा एक पेपर है गिलोय पे, वो आज तक का सबसे मोस्ट साइटेड पेपर है, पबमेड का पेपर है। तो कौशल सर का बहुत बड़ा काम रहा है इथनो मेडिसिन और आयुर्वेद के क्षेत्र में। नहीं, इसके तो लिए आप भी बधाई के पात्र हैं। आपने बहुत अच्छा मोर्चा संभाला, और वर्ल्ड में उसका रिकॉर्ड अभी तक कोई नहीं तोड़ पाया। अभी तक तोड़ नहीं पाया है, वो मोस्ट साइटेड हमारा। 337 गूगल साइटेशन। हाँ, तो ये सब आप लोगों का ही आशीर्वाद है। नहीं, आपकी बाकी मेहनत। मैं अभी हम टेबलेट मैन्युफैक्चरिंग, सर प्लीज ये प्रेजेंटेशन हटा दीजिए, इसके बारे में तो डॉक्टर दिनेश ने सब बता दिया है, तो ये हटा दीजिए। 2 मिनट में वैसे ही बोलूंगा। तो मैं विशेष रूप से बात करना चाहूंगा कि सबसे पहले मैंने प्रारंभ किया था किसी भी औषधि विज्ञान की, चिकित्सा विज्ञान की इम्पोर्टेंस तभी होती है जब औषधियां
अच्छी तरह से कार्मुक हो, इफिकेशियस हो। उस दृष्टि से अगर देखा जाए तो अनुसंधान की बहुत कमी है हमारे आयुर्वेद शास्त्र में। हमारे पुराने आचार्यों, जो पहले के हमारे आदरणीय वैद्य लोग हैं, उन लोगों का प्रारंभ से ही ये मानना रहा है कि जो औषधियां पुराने विधि से यानी शास्त्रोक्त विधि से बनाई जाती हैं वो ज्यादा कार्मुक होती हैं, और जो मॉडर्न इक्विपमेंट से बनाई जाती हैं औषधियां वो कम कार्मुक होती हैं, या उनकी कार्मुकता इफिकेशियस वो उतनी नहीं होती हैं। इस क्षेत्र में हम लोगों ने अनुसंधान भी प्रारंभ किया है कि एक हम जो ट्रेडिशनल मेथड है, ट्रेडिशनल मेथड से क्वाथ बनाना, क्वाथ बना के उसका घन बनाना, घन बना के ट्रेडिशनल मेथड से उसकी भावना देकर उसको ड्राई करके ग्रेन्यूल बना के और उसका हाथ से टेबलेट बनाना, और एक मॉडर्न विधि से बनाई गई जो औषधि है उसको बना के हम उन दोनों को क्लिनिकल ट्रायल करके किस तरह से उसकी वास्तव में क्या, जो हमारे पुराने आचार्यों और पुराने वैद्यों का जो सोचना है कि हमारी जो औषधियां हैं टेबलेट फॉर्म्स हैं, वो टेबलेट फॉर्म जो पुराने विधि से बनाई जाती हैं शास्त्रोक्त विधि से वो ज्यादा उत्तम है, एफिकेशियस है, या जो हमारी औषधियां मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बन रही हैं वो उत्तम है। विशेष रूप से अगर हम बात करें रोगी के हित की, कि रोगी को लेने के लिए कौन सा फॉर्म सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, तो निसंदेह सभी पंच कषाय कल्पनाओं में टैबलेट फॉर्म जो होता है, टैबलेट फॉर्म सबसे ज्यादा बेहतर फॉर्म होता है, सबसे अच्छा पैलेटेबल होता है, इजी टू टेक होता है, और उसकी हम पोटेंसी को ज्यादा दिनों तक बरकरार रख सकते हैं। तो बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं, चाहे वो आजकल पतंजलि हो, हिमालय है, दूध पापेश्वर है, वैद्यनाथ है, तो इन सारे कंपनीज ने आप मैन्युफैक्चरिंग के साथ में रेस्पेक्टिवली क्लिनिकल ट्रायल्स पर भी, पतंजलि तो वैसे बेसिक रिसर्च का काम भी उसने बहुत बृहत स्तर पर कर दिया है। बेसिक रिसर्च का मतलब आयुर्वेदिक जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं उन पे रिसर्च, और जो हमारी मेडिसिन हैं उन पे प्री क्लिनिकल ट्रायल, टॉक्सिकोलॉजिकल, फार्माकोलॉजिकल और एनिमल ट्रायल्स, ये भी बहुत बृहद स्तर पे शुरू कर दिया है। तो ये सब कार्य हमारे सभी आयुर्वेदज्ञ जो हैं, मेरा अंत में यही अनुरोध है कि किसी भी आयुर्वेदिक औषधि को हमें, आयुर्वेद को अब चूरन चटनी के परसेप्शन से बाहर निकालना है। उसके लिए हमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी की तरफ जाना आवश्यक है, लेकिन मॉडर्न टेक्नोलॉजी को हम उस अनुरूप ही इस्तेमाल करें कि जिससे हमारे जो प्राचीन शास्त्रों के अनुसार कार्मुक औषधियां होती थी उसी तरह ही औषधियों का हम निर्माण कर सकें। तो हमारा मूल उद्देश्य यही होना चाहिए कि हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, आईआईटी के प्रोफेसर कटियार ने हम लोगों के साथ प्रारंभ में भी इस तरह की स्टडी, जब हमने पहला एक्सट्रैक्शन प्लांट लगाया था दिव्य फार्मेसी में, उस समय इस तरह की स्टडी उन्होंने प्रारंभ करवाई थी कि जो हमारे घन ट्रेडिशनल मेथड से बनाए जा रहे हैं और जो घन हमारे मॉडर्न एक्सट्रैक्टर से बनाए जा रहे हैं उनमें क्या डिफरेंस हो रहा है। तो इसी तरह के काम हमें सारे डोजेज फॉर्म्स जो हैं, टेबलेट हैं, हमारे सिरप्स हैं,
और भी जितने भी हमारे डोजेज फॉर्म है उन पे निर्माण के साथ में, व्यवसाय के साथ में अनुसंधान की बहुत आवश्यकता है, जिससे हम आगे अपने पैथी को, अपने आयुर्वेदिक सिस्टम को लोगों तक इफिकेशियस रूप से, कि एक बार जो हमारी औषधियों को लें वो दोबारा हमारी औषधियों को लेने के लिए आए। और आज मैं सभी से क्षमा चाहूंगा कि बहुत ज्यादा फेमिलियर नहीं था मैं इस तरह के कार्यक्रम के लिए ऑनलाइन। तो आगे से मैं इसको और अच्छे से सीख के आऊंगा, और अच्छे से प्रेजेंटेशन को तैयार करने का भी बहुत ज्यादा समय नहीं था, और गुरुजी का आदेश था, और गुरुजी के सानिध्य में बहुत बहुत ही। धन्यवाद साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आपका भी सर, जी जी, कि आपने इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे इतने बड़े बड़े विद्वानों के बीच मौका दिया। आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद साहब, धन्यवाद। मैं 2-3 बातें कहना चाहता हूँ साहब इसमें। 33 साल के मेरे फार्मा के एक्सपीरियंस में, मैं प्रेजेंटेशन तो नहीं दिखा रहा। स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है प्रोफेसर पवन शर्मा जी। प्रोफेसर होने के पहले सर R&D वाला था, इमामी वाला था, झंडू वाला था। तो उसके लिए आज टैबलेट की केवल ओरल टैबलेट की कल्पना नहीं है। यदि हम टैबलेट की बात करते हैं तो राइट फ्रॉम ओरल टैबलेट टू लॉजेंज, लॉजेंज टू ट्रोचेज, ट्रोचेज टू वेजाइनल टैबलेट, डिस्पोजेबल टैबलेट, डिस्पोजेबल टैबलेट, कितनी तरह की टैबलेट है। आज आयुर्वेद की कई तरह की टैबलेट्स बन रही हैं, सबलिंगुअल टैबलेट। श्योर टैबलेट सर, के श्योर, ये बहुत, बिल्कुल सर। जी जी, तो टैबलेट वो कंटिन्यूअस, वो अब अलग अलग तरीके की है। नंबर दूसरा, मैं जहां तक मुझे याद है, मैं जामनगर में 89 में MD किया रसशास्त्र में, हरिशंकर शर्मा जी के अंडर में। उस समय से ये बात चल रही है, और जामनगर में 3 या 4 थीसिस इस पे हो चुकी है ऑलरेडी, कि टैबलेट अच्छी के बटी अच्छी, किसकी हार्डनेस अच्छी, किसका डिसोल्यूशन एंड डिसइंटीग्रेशन टेस्ट अच्छा। केवल 3-4 बातें हैं हमारे यहाँ। एडेसिव माने अकेसिया गम हो या कुछ भी हो, जो भी हमारा बाइंडर है। उसके बाद में यदि हम कहें लुब्रिकेंट, डिस्पर्सिबल, ये तीनों चीजों का यदि कॉम्बिनेशन किसी केमिस्ट ने बेस्ट कर दिया जड़ी बूटी का मॉइस्चर देख के, तो डेफिनेटली टैबलेट विल बी आइडियल एंड स्टैंडर्डाइज। अभी टैबलेट की भी बात आई तो टैबलेट की बात आती है बिटर टैबलेट। बिटर टैबलेट हो तो भी उसकी कोटिंग जरूरी हो जाती है। कोटिंग की भी कई वैरायटी आई, वो शुगर कोटिंग आई, फिल्म कोटिंग आई, एक्सट्रैक्ट कोटिंग आई उसी का, सिल्वर कोटिंग हमारे यहाँ पहले से थी, गोल्ड कोटिंग हमारे यहाँ पहले से थी बटी और गुटिका में। आज वो टैबलेट में से गायब होती जा रही है। तो कॉस्टली वाली कोटिंग जो थी वो टैबलेट में से गायब होती जा रही है, और वो फिल्म कोटिंग या शुगर कोटिंग की चीजें हमारे सामने आती जा रही है। एक बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हम किसी हजमा हजम चूर्ण की कोटिंग करें, जैसे हिमालय ने गैसेक्स जो है वो नमक सॉल्ट कंटेनिंग फॉर्मुलेशन है, फिर भी वो अपने को शुगर कोटिंग में पड़ता है। क्यों टैबलेटिंग? सॉल्ट कंटेनिंग, जितने शुगर कंटेनिंग या सॉल्ट कंटेनिंग प्रोडक्ट्स हैं, उनको यदि आप कैप्सूल में डालेंगे तो वो हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होने के कारण कैप्सूल का कलर पूरा भद्दा कर देंगे। कैप्सूल की जो शेल है वो पूरी की पूरी नष्ट हो जाएगी। कोई भी पेशेंट उसको खाना पसंद नहीं करेगा। तो आज के युग की ये मजबूरी है कि हम केवल वटी गुटी न बनाते हुए और उसको टैबलेट में जाएं। ये मतलब मजबूरी कह लीजिए। क्यों? डोज एडमिनिस्ट्रेशन है कन्वीनियंस के लिए। जब सर्वे किया गया पूरा, और सर्वे में ये पाया गया कि जितने एडल्ट मेल्स हैं जनरली वो टैबलेट को प्रेफर करते हैं, टैबलेट या कैप्सूल को, इन कंपैरिजन टू पाउडर और सिरप। और जब ये लेडीज के बारे में वो किया गया तो उनका परसेप्शन वो सिरप पे ज्यादा था। मैं नहीं जानता क्यों उनका एक चॉइस है, लेकिन उनका सिरप में था। फिर भी जो वर्किंग लेडीज है वो हमेशा टैबलेट और कैप्सूल को प्रेफर करती।
अब हम पे चॉइस अगले बार कैप्सूल की भी करेंगे, आज डिटेल टैबलेट की बात कर ली, तो टैबलेट की अभी श्रीजा कायमल जी क्वालिटी कंट्रोल पे बोलेंगी टैबलेट के, तो टैबलेट के कंपोजिशन, फॉर्मुलेशन, डिस्पर्सन, एक उनकी डिसोल्यूशन रेट, डिसइंटीग्रेशन रेट, हार्डनेस, फ्राइबिलिटी, इन सबके ऊपर आपकी 3 चीजें डिपेंड करती हैं। जो लुब्रिकेटिव है लुब्रिकेशन के लिए, या आपका बाइंडर है, या एक्सीपिएंट्स है जो फ्री फ्लोइंग के लिए उसको किया है, वो आपको तीनों चीजों को बैलेंस करके अपने पास डालना चाहिए। कितनी रेंज है झंडू के पास टैबलेट्स की, वटियों की भी रेंज है, टैबलेट्स की भी रेंज। इसमें क्या हुआ कि हमारी शास्त्रीय जो गुणवत्ता थी वो कम हुई या खो गई, इसमें तर्क और दोनों तरफ के तर्क हैं। पहले मैनुअली बनती थी, गंदगी के हाइजीन के ज्यादा चांस रहते थे। आज नो मैनुअल टच है, नो हैंड टच है, जिसमें पीएलसी से दिनेश जी ने बताया कि एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन द बॉक्स, पूरा का पूरा पीएलसी बॉक्स जो है, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की मदद से सब कुछ सेट कर देते हैं, कौन सी चीज किस क्वांटिटी में जाएगी। अब इसमें वो वाली चीज चली गई कि वर्कर बीड़ी पी रहा था तो दवा बिगड़ गई, वर्कर चला गया था थोड़ा तो दवा बिगड़ गई। ये सब चीजों को नलीफाई करने के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने कंप्यूटर बनाए, लेकिन इन दवाइयों में कहीं ना कहीं जो पर्सनल एक श्रद्धा थी, जो ये कहा जाता था कि वैद्य जी जब अपने हाथ से या अपनी टीम के हाथ से दवा बनवाते हैं तो उसमें एक रोगी के प्रति ऊर्जा का भाव रहता है, एडिशनल एनर्जी रहती है। वो एडिशनल एनर्जी आजकल कॉमर्शियल हो गई, उस एडिशनल एनर्जी का कोई मतलब आजकल नहीं रह गया है, क्योंकि वो बल्क बनना है, बल्क पैक होना है। बात केवल कोटिंग तक की नहीं है, पॉलिशिंग, कोटिंग, और उसके बाद में उसकी अल्टीमेट पैकिंग, वो डिब्बे में होगी कि वो स्ट्रिप में होगी कि वो आपके कैप्सूल के ब्लिस्टर पैक में होगी, किसमें होगी, ये भी एक आपको इंग्रेडिएंट के ऊपर डिसाइड करना पड़ता है और मार्केटिंग के हिसाब से डेवलप करना होता है कि हमें किससे बेस्ट दिखना है और हमें किससे बेस्ट प्रोडक्ट को प्रिजर्वेटिव करना है। बात रही प्रिजर्वेटिव की, हाँ, हर्बल जड़ी बूटियों में ज्यादातर प्रिजर्वेटिव रहते हैं, जिनमें ज्यादा भस्म या रसयोग रहते हैं उनमें प्रिजर्वेटिव की आवश्यकता नहीं रहती। हमारे यहाँ मरकरी को कृमिनाशक बताया है, तो मरकरी जिन प्रोडक्ट्स में रहता है, भले ही वो थोड़ी क्वांटिटी में भी रहे, उनमें जनरली प्रिजर्वेटिव अवॉइड करना उचित है। अनवांटेडली सोडियम बेंजोएट, टीवीएचक्यू, एचबीटी, टीवीएच, ऐसा कुछ भी देने की जरूरत नहीं रहती, एमपीपीपी कुछ भी हो, मरकरी उसमें अपने आप प्रिजर्वेटिव का काम करता है। यदि वो कोटेड टैबलेट है सपोज, तो भी उसमें एक बार प्रिजर्वेटिव अवॉइड किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि उसकी कोटिंग हमने परफेक्ट कर दी है, और शुगर इटसेल्फ प्रिजर्वेटिव। यदि शुगर कोटेड है तो शुगर के सिरप में हम कोई प्रिजर्वेटिव हमें नहीं मिलाना चाहिए। शुगर सिरप यदि 67% कंसंट्रेशन का है तो उसमें सिरप प्रिजर्वेटिव की जरूरत नहीं। लेकिन आज चूंकि शुगर की क्वांटिटी कम कर दी जाती है, आर्टिफिशियल स्वीटनर दिए जाते हैं, इसलिए उनको प्रिजर्वेटिव मिलाना बाध्यता है। प्रिजर्वेटिव यदि शुगर सिरप ओरिजिनली अपने आप हो तो उनमें कोई सिरप के वो उसकी प्रिजर्वेटिव की जरूरत नहीं। ऐसे ही नमक वाले जो जितने प्रोडक्ट्स हैं उनमें भी कोई भी प्रिजर्वेटिव की जरूरत जनरली नहीं होती, क्योंकि वो अपने आप नमक और खट्टाई से प्रिजर्वेशन अपना करते रहते। बात रही टेक्नोलॉजी की, आज छोटी छोटी मशीनें आ गई हैं टैबलेट की, चाहे वो डिसइंटीग्रेशन हो, रिडक्शन ऑफ साइज, चाहे वो उसको सीविंग हो, चाहे वो उसकी फिल्ट्रेशन हो, मिक्सिंग हो, ग्रेनुलेशन हो, ब्लेंडिंग हो, तरह तरह के अपने पास सब कुछ उपकरण मौजूद हैं। और मात्र इसलिए कि उनमें हैंड टच नहीं हो, उसमें क्वालिटी बनी रहे, उसका साइज वेरिएशन नहीं हो, कलर वेरिएशन नहीं हो, ये सब चीजों के लिए सेमी ऑटोमेटिक बड़ी सस्ती सस्ती मशीनें हैं। ऐसा नहीं है कि ये सब करोड़ों की है। हाँ, उसके पहले हमको जरूर याद रखना होगा कि जो बीओएम बनाते हैं हम, वो परफेक्ट हो, क्वांटिटी सही हो, आदमी अलर्ट हो, प्रोसेसिंग के सही समय पे
उसने मिलाया हो, चाहे वो मिक्सर के पहले, चाहे वो टैबलेट के पहले, ऑनलाइन क्वालिटी कंट्रोल सही हो रहा हो, और तब फिजिक्स प्रोडक्ट क्वालिटी कंट्रोल की बात आती है। नॉट ओनली दैट, हमारी टैबलेट या कैप्सूल उसकी पैकिंग के साथ कंपेटेबल है, तो हम जिस डिब्बी में दे रहे हैं उसको, या जिस ब्लिस्टर पैकिंग में दे रहे हैं, क्या उसमें उसकी शेल्फ लाइफ है? तो ये सब बातें गौर करने की बड़ी इंपॉर्टेंट जरूरत है। और इसमें हर चीज में काम आता है अपनी त्वरित बुद्धि, कि यदि वो भंगुर हो रही है तो बाइंडर मिलाना है, यदि वो हार्ड हो गई है तो डिस्पर्सिबल बेस मिलाना है, यदि वो कहीं समझ लो रूक्ष हो गई है तो लुब्रिकेंट्स मिलाना है, डाई में चिपक रही है तो फ्री फ्लोइंग मिलाना है। ऐसे प्रॉब्लम देख के सॉल्यूशन, और वो भी बड़े मिलीग्राम्स में है, वेरिएशन बड़ा थोड़ा है। ऐसा नहीं कि कोई भी चीज लुब्रिकेंट हो कि बाइंडर हो वो किलो किलो डालनी पड़ती हो, ऐसा नहीं है। परसेंटेज के हिसाब से वो बहुत कम रहती है, नंबर एक। नंबर दूसरी बात, एलोपैथी में एक्सिपिएंट्स डालने का विधान है। क्यों? क्योंकि उनको गोली बड़ी दिखानी है और उनके पास माल थोड़ा है, थोड़े से एमजी में माल है, उसको हमको 500 एमजी या 200 एमजी या 300, एक रिस्पेक्टेबल साइज जो पेशेंट देखे तो सोचे कि हाँ मैं कुछ दवा खा रहा हूं, भले ही वो 1 एमजी की दवा हो, आपके हाथ में वो गोली आएगी 100 एमजी की, 200 एमजी, दवा एक ही एमजी है। तो उनको एक्सिपिएंट्स की ज्यादा सोचनी पड़ती है, बेस की ज्यादा सोचनी पड़ती है। आयुर्वेद वाले तो वैसे ही वेटरनरी डोज की गोली बनाते हैं कि हम सबसे बड़ी गोली बनाते हैं, हमें एक्सिपिएंट्स की ज्यादा जरूरत नहीं है। एक्सिपिएंट्स की जरूरत केवल फ्री फ्लोइंग के लिए है, लुब्रिकेशन के लिए है, या बाइंडिंग के लिए है। हमें साइज बढ़ाने के लिए किसी एक्सिपिएंट की कोई जरूरत नहीं। आजकल बहुत अच्छा होने लगा। अभी एक फैक्ट्री देखी मैंने मुंबई में, आदरणीय भानुशाली जी की। जब हम बॉईल करते हैं किसी को, टीडीएस निकाल के हम एक्सट्रैक्ट निकालते हैं, तो एक ये बड़ी क्लियर बात है कि उसका वॉलेटाइल ऑयल उड़ जाता है। क्वाथ बनाया, क्वाथ बना के घन बनाया, सॉरी, घन बना के उसकी टैबलेट बनाई, तो उसमें जो भी वॉलेटाइल परसेंटेज है, जो इसेंशियल ऑयल है, वो नहीं मिलेंगे। तो मैंने पहली फैक्ट्री देखी, पहली या दूसरी, जिसमें वो घन बनाने के समय में ऊपर एक सिस्टम है, वॉलेटाइल ऑयल को वो साइड में कलेक्ट करते हैं, उसको वो एफबीडी से सुखाते हैं, और जो वो एंड में बचता है वो फिर पाउडर में बोल मिला के उसको लुब्रिकेंट की तरह यूज करके और वो लोग अपनी टैबलेट बनाते हैं। दैट मीन्स दे आर ट्राइंग टू एड अप वैल्यू एडिशनल एफिकेसी of volatile oil which are the costliest ingredient of the herb। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। हम लोग आयुर्वेद वाले क्वाथ बनाने के चक्कर में बड़े भगोने से जो भी उसमें वॉलेटाइल ऑयल है, जिनकी वजह से उसके मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, वो सब नष्ट कर देते हैं। बेटर हो कि आयुर्वेदिक एक्सपर्टीज इसमें रहे कि वो वॉलेटाइल ऑयल निकल आए, और यदि वो बाद में मिल जाए तो उसमें आपकी इफिकेसी सबसे ज्यादा बढ़ी रहेगी। ये सब मेरा मानना है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, हम जब पैक करने जाते हैं, एक छोटी सी चीज हमारी टैबलेट की शेल्फ लाइफ बढ़ा देती है, सिलिका जेल बैग। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हमको याद नहीं रहती। हम दवा को पेशेंट के सामने वैसे ही शीशी में एक बड़ी से निकाली, छोटी में दी, लेकिन हमें सिलिका जेल बैग डालना याद नहीं रहता। वो पेशेंट के जाके मॉइस्चर के कारण डिफॉर्मिटी जो होगी, वो आपकी हाइग्रोस्कोपिक सिलिका जेल बैग छोटी सी आती है, 50 पैसे 1 रुपए की चीज है वो, लेकिन आपकी 100 टैबलेटों की शेल्फ लाइफ वो कई गुना बढ़ा देती है। आपको मॉइस्चर से आपकी टैबलेट या कैप्सूल डिफॉर्म नहीं होंगे, और आपका इफिकेसी भी बना रहेगा, क्योंकि वो मॉइस्चर से इंटरेक्ट नहीं कर। ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं। मेरा बहुत डिटेल प्रेजेंटेशन है इस पे, कभी नेक्स्ट टाइम इस प्रेजेंटेशन की बात होगी, क्योंकि यहाँ तो राइट फ्रॉम ड्राई ग्रेन्युलेशन, वेट ग्रेन्युलेशन, डायरेक्ट कंप्रेशन, हर चीज में एक विज्ञान है। आयुर्वेद की चीज एक डायरेक्ट कंप्रेशन में भी यदि आ जाए तो भी एक कई चीजें हैं। अब हम लड्डू बनाने के लिए कौन सा कंप्रेशन करते हैं? हाथ का सॉफ्टनेस वो बिल्कुल, हर लड्डू में हम कौन सा बाइंडर डालते हैं? न तो उसमें बाइंडर है, न उसमें कोई एडिसिव है, न गम है।
केवल बेसन के लड्डू बनाइए, लुब्रिकेंट है, रूक्ष चीजें हैं, घी डला हुआ है उसमें, अपने आप लड्डू बन जाते हैं। बस ये लड्डू लेकिन उन मशीनों पे नहीं बनाए जा सकते जिन पे टेबलेट बनाती हैं, वो उनके पंच चिपक के रह जाएंगे, कंफ्यूजन हो जाएगा। मात्र इसलिए हमको एडिटिव्स डालना है, अदरवाइज आयुर्वेद की थ्योरी में एडिटिव्स डालने की थी नहीं बात। आप एक्सट्रैक्ट लीजिए, हाँ ये 2-3 कंपनियों का कंसेप्ट है, वो कुछ चीजों का हिमालय, कुछ चीजों की वो एक्सट्रैक्ट लेते हैं, कुछ चीजों का वो पाउडर लेते हैं, दोनों को मिला देते हैं और फिर बंचिंग करते हैं। एक्सट्रैक्ट लेने का जो कॉस्टली है उनका एक्सट्रैक्ट लिया, या जो बल्कि है उनका एक्सट्रैक्ट लिया, जो साइज ज्यादा बढ़ा रही थी आपकी। तो दोनों चीजों में कई गणित है। चलिए फिर चर्चा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आई वुड लाइक टू इनवाइट डॉक्टर श्रीजा काइमल। वेलकम डॉक्टर श्रीजा। डॉक्टर श्रीजा काइमल, I hope I am audible to you. Yes, welcome, Doctor. She is in production of KLE Belgavi's Ayurvedic Pharmacy, very good college, NAC accredited college. Welcome. Kindly unmute yourself. Your screen is visible. Please go for slideshow. Okay. Am I audible, sir? Yes, clearly, loud and clear. Please go for slideshow to maximize the size. Okay, sir. A warm good evening to one and all present here. Myself, Dr. Srija Kaimalvi, Production Supervisor, KLE Ayurveda Pharmacy, Belgavi, Karnataka. First of all, I would like to thank Dr. Pawan Kumar Sharma sir for inviting me to talk in this webinar series. So today I will talk in the topic quality control analysis of Kuti, Vati and tablet. Already we have got a nice explanation about the preparation of tablets, quality control of tablet. Then also I would like to go through some of Ayurvedic concept of Kuti and Vati. Vati is an important drug delivery system in Ayurveda. In 13th century AD, Acharya Sharangadhara explained in detail about Vaishajya Kalpana in Sharangadhara Samhita. He explained various Kalpanas, and in one of these chapters, that is 7th chapter, he explained about Vati. Kalpanas means Yojana or Samskara. According to Acharya Vakpata, Vati Kalpana is derived from Kalka Kalpana. The Panjavita Kashaya Kalpanas are the fundamental preparations. All other formulations are derived from fundamental preparations. So Vati Kalpana is considered as a secondary Kalpana. Vati Kalpana is a pharmaceutical procedure in which the powder of raw drugs, that is herbal or herbomineral, triturated together with certain juices, infusions, decoctions, or even honey, and then are prepared in the form of pills or tablets. There are so many types of Vatis in Ayurveda. Gutika, like circular shape, flat form. Vati, it's in circular mass. Varti, it's having a long oval shape form, that is Yava shape, thick in the middle with tapering end. This form is meant for administration into the body cavities like urethra, vagina, rectum and eye. Then Vataka, it's a big circular mass form. Then Modaka is a round shaped pill. The size is bigger and it weighs around 20 gram to 50 gram. Then Pinda, here Aushadhi Churna is mixed with sugar and molded into a shape of circular mass. The size is that of a single bolus of food. Then according to Acharya Sharangadhara, two types of methods are there for the preparation of Vati. The first one is with the aid of heat and second one is without the aid of heat. The first one with the help of heat. Here, desired quantity of base drugs like jaggery, sugar, gugulu are taken in a clean, wide-mouth stainless steel vessel. Then required quantity of water is added and then the contents are heated over fire with frequent stirring. When the syrup is formed, the fine powders of drugs are added in small quantity up to the desirable consistency is obtained. Then the mass is rolled into pills and the pills are dried in shade and stored in airtight containers. Then without the aid of heat, here in one method, desired quantity of base drugs like gugulu, jaggery are pounded well in mortar and pestle. Then fine powders of drugs are added little by little.
When the required quantity, then it should be triturated well. When the required consistency is occurred, then the mass should be rolled into pills of desired shape and size. Then it should be dried in shade and stored in airtight containers. In another method, the fine powders of medicinal drug is taken in mortar and pestle. Then specified liquids like water, cow's milk, swarasa, quatha, honey, etc. are added in required quantity. Then the mixture is triturated well to attain a required consistency. Then the pills are rolled, dried in shade and stored in airtight containers. The sequence of adding of components in the formula. If the drug is a plant origin, then it should be dried properly and made it into fine powder, preferably more than 85 sieve size. If minerals are used, then it should be in the form of bhasma and sindura unless otherwise it is mentioned. In case the formula contain mercury and sulfur, then first we have to prepare kajali. Then afterwards, the other drugs can be added to this kajali. Then it should be triturated well in a mortar or pestle. When more than one liquid is mentioned for grinding, then they should be used in that succession order. When the mass is properly ground and it is in a condition to be made into pills, then Sugandha Dravya should be added. Means the last part only Sugandha Dravya should be added. Otherwise, that volatile components and phytochemical constituents may disappear. The criteria to determine the final stage of the formulation before making pill is that it should not stick to the fingers when rolled in between two fingers. In case where sugar or jaggery is mentioned, then syrup should be made on mild fire. Then the medicinal powders are added to that syrup and briskly mixed. When still warm, vatakas should be rolled and dried in shade. The role of essential components, ratio of essential components. If we are using crystallized rock sugar, then 4 times of the churna, we should use the crystallized rock sugar. If jaggery is using, then 2 times of churna, we have to use jaggery. Gugulu and honey should be used in the equal proportion. If water or any other liquids are using, then it should be 2 times more than that of churna. The vati matra, according to Acharya Sharangadhara, it should be 1 karsha, that is 12 gram. Anupana, vati is administered along with water, honey, milk or any other suitable liquid preparation. The shelf life, gutika or vati containing only kashtaushadhi, that is herbal medicines, is 3 years. Then gutika or vati containing kashtaushadhi along with rasa, uparasa, bhasma, gugulu, which includes lepa, gutika and khanavati also, the shelf life will be 5 years. Then gutika or vati containing only rasa, uparasa, bhasma, the shelf life will be 10 years. All these things Dr. Dinesh sir explained very well. So there is no need for any explanation also. Now I will directly go into the standardization. First, analytical parameters. We have to check the organoleptic parameters of the tablet. First, the description should be given. Then the color should be checked, whether it is uniform, no mottling is there. Then we have to check the order, characteristic order of the formulation is there or not. There should not be any disagreeable order. Then we have to check the taste. The characteristic of the formulation taste should be there. Then if sugar is added, then we have to check the total sugar and reducing sugar or non-reducing sugar. Then phytochemical assessments. It includes particle size, then identification like microscopic characters. We can do TLC, HPTLC, HPLC, LCMS, etc. Then test for heavy or toxic metals. It is designed to determine the content of metallic impurities that are colored by sulfide ion under specified conditions. There is a permissible limit for heavy metals in each and every our medicines. The lead should be less than 10 ppm. Arsenic should be less than 3 ppm. Cadmium should be less than 0.3 ppm. And mercury should be less than 1 ppm. Then microbial contamination also we have to check. Then test for specific pathogens. Then pesticide residue also we have to check. That the residue of pesticides including their metabolites and or degradation products will remain in plants or in the soil that become a notable source of contamination for herbal medicines. Then we have to test for aflatoxins also. Aflatoxins are also very dangerous. This test is provided to detect the possible presence of aflatoxins B1, B2, G1, G2. This one is also having a permissible limit. B1 and G1 should be less than 0.5 ppm
and B2 and G2 should be less than 0.1 ppm. Then physical evaluation like total ash, acid insoluble ash, water soluble extractive, alcohol soluble extractive, pH, volatile oil determination, loss on drain. Then pharmaceutical parameters. First one is hardness. The force required to break a tablet in a diametric compression test is known as hardness. It can be determined using Monsanto hardness tester or Pfizer hardness tester. It is used to determine the breaking point and the structural integrity of a tablet and find out how it changes under conditions of storage, transportation, packaging, and handling before usage. The limit is standard compressed tablet should be 5 to 8 kg per cm. The next one is friability. It measures the physical strength of the tablet on exposure to mechanical shock and attrition. Here we can use Roche friability tester. It used to measure the physical strength of the tablet. Measurement of tablet friability supplement other physical strength measurements such as tablet breaking force also. The limit is percentage friability should be comes under 0.5 to 1%. The next one is thickness. Thickness impacts on disintegration and dissolution behavior. In addition, thickness can be a useful indicator of the consistency or otherwise of tablet weight, which is controlled to ensure dose uniformity. Here we can use micrometer or vernier calipers. The limit plus or minus 5 of the standard value. The next one is weight variation. Here we can use analytical balance. According to IP limits, if the tablet weighing 84 mg or less, then it should be plus or minus 1%. If the tablet weighs 84 to 250 mg, then it should be plus or minus 7.5%. If it is greater than 250 mg, then it should be 5%. The next one is content uniformity. It is used to assess the quality of a batch. Testing for content uniformity helps ensure that the strength of a therapeutic product remains within the specified acceptance limits. Here, we can take random sampling of 30 tablets. First, we have to perform assay for 10 tablets individually. If the drug content in 9 of the 10 tablet is within the specified limit, that is 85 to 115% of the label claim, then the batch is passes. The assay of the 10 tablets should lie between 75 to 125%. If the tablet is not lying under this range, then again we have to perform the assay for the rest of the 20 tablets. Next one is disintegration time. It is used to show how quickly the tablet breaks down into smaller particles, allowing for a greater surface area and availability of the drug when taken by a patient. It should not be more than 35 minutes. If Gugulu is there, then it can be go up to 60 minutes. The next one is dissolution test. It measures the extent and rate of solution formation from a dosage form, such as tablet, capsule, ointment, etc. The dissolution of a drug is important for its bioavailability and therapeutic effectiveness. Disintegration is a process of breaking down a substance into tiny fragments or granules to improve its solubility in under specified conditions. Dissolution is a process through which a solute dissolves in a solvent under specified conditions. It measures the amount of drug release or dissolve in the media. With this, I'm concluding my presentation. Thank you. Thank you, one and all. Mesmerizing and the continue in flow. Great. Great, Dr. Srija, great. Thank you, sir. Thank you. Very nice. And it means to the point, specific, and very, very conclusive. Really excellent. Excellent for quality control of these. Only these parameters are also being used for tablets also. Maybe figure may be here and there, but the parameters are moreover same. Excellent. Agnihotri sir. Thank you, Professor Pawan Sharmaji. And again, I would like to say that your presentation is also of quality control. You maintain the quality with the view that what is the topic of today and how it can be concised in filling all the sectors. Overall, I think our today's guest speakers completed their work, and we are enriched with their knowledge. So, and time already has Now, gone. if anybody has any
specific question from the speaker, because today's subject is not that everybody can say. No. So only specific question with the specific speaker, if any, or any suggestion, because manufacturers are with us, respected manufacturers are with us. So please, sir. Exactly Dr. what Pawanji, namaskar. what I found बोलिए. that all the sir, what I found that all the guest speakers made their knowledge in a form of forming a tablet from Guttika or Batti, and persons, most of the persons are belonging to our Ayurvedic fraternity, so they have used this form of the medicine definitely throughout their life. So everybody has got the experiences and all that, and manufacturers are very much here. So we have just pointed out something which in a very beginning Dr. Pradhan sir told, and again our attention was drawn by Dr. Dinesh ji that a few preparations had been there which was not having at early stage by our Ayurvedic manufacturers making the tablet, and the complaints are there pertaining to all that process which has been discussed today. The one is our muscle fort by ml, it was getting teared or breaking. Again, the Niri tablet, it is also getting in the same blister pack, but getting teared because of the lesser or poor quality of binder. And the third one is Lavangadi and Vyoshadi, Ashwagandha or Samsamni, especially during this COVID, they were all getting most of the time in a powdered form from tablet. They are automatically getting its powdered form because of its brittle say quality or whatsoever I say. One important thing, on contrary, it was Shalaki MR, which was for the first time introduced in our college hospital. It I have got my personal experience that it could not be disintegrated throughout, say, day and night, and I passed it as such. I was scared that what is this button shaped situation, from where it came out in my fecal matter, and next visit I made this information to him that this is a hardener one, that the binder is so tough that it could not be dissolved during this much of time. And I asked my patient that you get it to 4 pieces before swallowing it, so that it could be say there to disintegrate and then will work as it's a pharmacological action. So things are there. We as a physician communicated throughout 30 years that which preparation is good or bad, and what need the correction, and it was corrected. So was the case with the Gibnet tablet. Gibnet tablet, because of some salt content, it was also getting burst before its use or sale. The person showing me the packets from the shop itself. So we are inviting any of the suggestions, addition, questions of that nature, which may be helpful for the manufacturing and quality control of the tablet itself. डॉक्टर अग्निहोत्री जी नमस्कार. नमस्कार, वर्मा जी बोल रहे हैं. हरीश वर्मा जी, नमस्कार सर. नमस्कार सर, नमस्कार. वेलकम. मैं आज बाहर हूँ, तो इसलिए अच्छा. हाँ, नहीं, आपका मैसेज आ गया था कि आप ज्वाइन कर रहे हैं. जी स्वागत है. तो डॉक्टर पवन शर्मा जी नमस्कार. मेरा एक क्वेश्चन है सर आपसे कि जो क्या मैडम अभी बता रही थी कि डिसइंटीग्रेशन टाइम जो है वो 35 मिनट्स होना चाहिए, और जो अगर गूगल प्रेपरेशन है तो उसमें मैक्सिमम 60 मिनट होना चाहिए. तो इज इट ए लॉ? ये बताइए मुझे कि क्या हमारा जैसे एलोपैथिक में डीटी जो है डिसइंटीग्रेशन टाइम ऑफ टैबलेट इज ए लॉ, तो क्या आयुर्वेद में भी क्या ये लॉ है? नहीं, बीपी में, डायबिटीज में, किसी में भी कोई लॉ नहीं है सर. रेंज है. एवरी डे where is quality control is there, where specifications are there is always range, not one law. Herbal ingredients are so different in nature that no law can be prepared. This is the law of experience, law of observation. In some material it can be less, in some material it can be hard. Suppose Google containing materials are there, definitely disintegration time will be more. And suppose trifluate bati is there, disintegration time will be much lesser than that Google bati. So there is no law. She was indicating, no doubt,
what is written in there and what we are observing there. But definitely no law is there, because every blood test has range, not one specific point, because Monday Matravinna and body constitution of every person is different. If suppose we take that tablet into the body, Agni, that is depending on Agni and the condition of stomach, where your stomach was empty or your stomach was filled with other filled materials. So this time is changeable, sir. This is not law, and no quality control specification is law, because that is range and variability is allowed, plus minus 0.5% variability. Generally it is allowed. थैंक यू सर, थैंक यू। पर एलोपैथिक साइड में तो ये लॉ है, अगर आपकी उनके पाउडर है ना सर, उनके नेचुरल प्रोडक्ट्स नहीं है, वो जड़ी बूटी अलग अलग जगह से आती है, अलग जगह वो पाउडर होती है, तो वो उनका तो पाउडर है केमिकल। दे कैन मेक एनी लॉ, बट इन आयुर्वेदा लॉ इज द ऑब्जर्वेशन। थैंक यू सर, थैंक यू सर। करेक्ट सर, करेक्ट सर। इट्स ओनली हाँ सर, इट्स ओनली a range sir, and dissolution every time it will depend upon the drug sir. If Gugulu is there, it will take more dissolution time, and if only our herbal materials are there, then it will take less time. It's only a range sir. Right, thank you, you are very thank you. Any other question please? मोता जी थे हाथरस से हमारे साथ, आदरणीय मोता जी कुछ बोलेंगे? तो ये सवाल भी मैडम जी से पूछ सकते हैं कि जो नीरी टैबलेट है वो क्यों ब्रेक करती है, क्या उसमें हाइग्रोस्कोपिक इंग्रेडिएंट्स हैं या उसमें कुछ और एंटी केकिंग एजेंट डालने चाहिए, क्या होना चाहिए उसमें? डेफिनेटली कुछ ना कुछ बाइंडिंग एजेंट ज्यादा होना चाहिए, एंटी केकिंग एजेंट डालना चाहिए। एट द सेम टाइम शलाकी एमआर में बाइंडिंग ज्यादा हार्ड था तो वो ब्रेक नहीं हुई। वो तो गूगल की वजह से सर, क्योंकि शलाकी इटसेल्फ इज ए गूगल, जो बॉसवेलिया सेरेटा है वो तो गूगल है, उसमें रेजिन्स होते हैं बिल्कुल। तो बट इट वाज ए एक्सीलेंट शो, एक्सीलेंट वेबिनार, बहुत नॉलेजेबल था। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू, थैंक यू। हरीश वर्मा जी, जी सर, एक रिक्वेस्ट करना चाहते थे आपको दायित्व देने के साथ। जी सर। 9 या 10 तारीख को एनआरआई डे है हमारे। अच्छा जी, मंच पे कितने अलग अलग कंट्री के एक एक डॉक्टर आ सकते हैं। ये हरीश वर्मा जी जिंदाबाद। कोशिश कर लेते हैं जी, कोशिश कर लेते हैं एनआरआई डे जी 10 तारीख को है दिवस जी, 10 तारीख को। आज अभी 9 बजे से वेबिनार एक चल रही है, जूम पे चल रही है, उनका इनविटेशन आ रहा है, तो वो लोग आज ही अरेंज कर रहे हैं अपने वेबिनार के लिए। हाँ, हमारे जो डॉक्टर नवीन गुप्ता जी हो गए, डॉक्टर हरीश शर्मा जी हो गए, आप सब लोग जुड़ के कई कंट्रीज के इनवाइटीज लाइए, जिससे कि उस दिन हम लोग अच्छे से सेलिब्रेट कर सके। चलिए सर, करते हैं कोशिश। हाँ, कोई कमिटमेंट दीजिए ना, कोई कमिटमेंट दीजिए। वो परसों नरसों ही है, 10 को है शायद। हाँ, तो वो आज शाम तक ही जो है तो सर के लिए, आज तो कनाडा में मॉर्निंग है, आज शाम तक हरीश वर्मा जी हेल्प कर देंगे, तो बाकी 8-10 तो हम भी कर लेंगे सर। जी जी जी, तो आज शाम तक करते हैं सर। थैंक यू, आपको थैंक यू वेरी मच। शाम तक भेजते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सर। Anybody else? Dr. Nilakshi is writing something in chat box that regarding the powder or something. आप डायरेक्ट जुड़िए, white powdery form, why the Google? अच्छा, a question is there. Dr. Kaushal ji may answer better on this point. Why the Satgulo is containing the white color? Dr. Kaushal ji is still there. He is. I think he has left. Can Dr. Avnish, you can say something? I am unable to understand the question, sir. The Satgula color, why it is of white color?
यानी सत्व नॉट एक्सट्रैक्ट, बस यदि सत्व हम निकालेंगे तो उसमें टेनिन सब निकल जाता है, फाइबर सब निकल जाते हैं, ओनली वाटर डिजोल्युबल पर्सन उसमें पोर्शन आता है, उसको हम सुखा के सत्व बनाते हैं। तो डेफिनेटली गुरुची घन नहीं, गुरुची सत्व हमेशा ही वाइट रहेगा। हम मक्के के बाल का महायवनाल क्षार बनाते हैं, कोई भी क्षार ले लीजिए, वो भी हमेशा व्हाइट और एश ग्रे कलर की मिलेगी आपको। Okay, thank you, sir. Actually, sir, when before when we used to buy medicine from Himalaya Guruchi tablet, then again for some reason I had brought Guruchi Sattva for my mother. Tablet is different, ma'am. Tablet is Yeah. different. Then at first time I thought, oh, Sattva, it is powdery form. Is it something different? Then I came to know. Sir, thank you, sir. Now I understood. क्योंकि मैडम टेनिन निकल चुका है उसमें से, उसमें जो सेल्यूलोज में टेनिन था दैट इज वॉश्ड आउट। Okay, sir. क्लियर मटेरियल डॉक्टर अवनीश इज ट्राइंग टू से। और सर एक्शन किसका ज्यादा रहता है, सत्व फॉर्म या टैबलेट फॉर्म का? सत्व का, सत्व का ज्यादा। टैबलेट का सर, टैबलेट तो उसी सत्व का बनेगा। टैबलेट में सभी कुछ है, सत्व में एक पर्टिकुलर सॉल्ट है। ओके सर। बट फॉर व्हाट यू आर गोइंग टू यूज कहना चाहते हैं जी डॉक्टर अवनीश? अग्निहोत्री जी। यस सर। अच्छा, आदरणीय रोमा जी का स्वागत है, नमस्कार। एक मिनट अवनीश जी अपना स्टेटमेंट दे दे, फिर आपको लेते हैं। एक्चुअली सर, गुरुची सत्व का प्रयोग हम एक शीत औषधि के रूप करते हैं। गुरुची सत्व का प्रयोग कई औषधियां जो तेज होती हैं, मारक होती हैं, उनके साथ जब गुरुची सत्व का प्रयोग किया जाता है तो उनका गुण शीतल हो जाता है। तो इस वजह से भी गुरुची सत्व का प्रयोग। आप हाँ, नहीं सही कह रहे हैं आप। मैंने अक्सर त्रिभुवन कीर्ति रस या प्रवाल गोदंती के साथ जब गुरुची सत्व डालते थे, विशेष रूप से जीर्ण ज्वर में, और थोड़ा सा रिजुविनेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से गुरुची सत्व या सत्वगुलो या अमृता सत्व को हम लोग एक रसायन के रूप में भी लेते थे। तो आपने सही कहा, उस समय ये रिजुविनेटर रहता है, और जो उसमें साथ में अगर वसनाव की प्रिपरेशन है, चाहे संजीवनी हो या और हुआ, तो उसके लिए वो एक काउंटरएक्ट करने के लिए उसके एक्सिस इफेक्ट को कम कर देता है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अवनीश जी। डॉक्टर जगदीश्वर डोमा जी, आदरणीय डोमा जी का स्वागत है। आप अपने कुछ शंका जो है उसको रखिए सामने। स्वागत है। डॉक्टर हरीश वर्मा जी दिखते ही मुझे टीनोस्पोरा कार्डिफोलिया याद आता है। हाँ, भविष्य से तो हाँ, उन्होंने गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी में जो रिसर्च के तरफ से बोल रहे थे, अभी यहाँ पर मैं उसी क्लैरिफिकेशन बहुत दिन से देने के लिए तैयार था, लेकिन मौका नहीं पड़ा, अभी दे रहा हूँ। टीनोस्पोरा कार्डिफोलिया को जिसे अमृतवल्ली अपन जो बोलते हैं, तो उसका पाउडर फॉर्म में क्रूड होता है और उसी का टैबलेट फॉर्म में बनाते, और आप लोग तो मैन्युफैक्चरिंग साइड में डिस्कशन किए होंगे। लेकिन यही था हरीश वर्मा जी का कमेंट, जो ये लिवर को डैमेज करता है और इंटेस्टिनल डिसऑर्डर पैदा करता है। वहां पर क्रूड मटेरियल, हरीश वर्मा जी क्रूड मटेरियल में जो यूज करते हैं, वो कर सकता या नहीं कर सकता, आप लोगों का वो रिसर्च में क्या आया मैं नहीं जानता। उसी पर पिछले बार में आप बोल रहे थे कुछ ब्लीडिंग हो रहा था। ब्लीडिंग का मतलब उसको स्टॉप कर सकते सत्व से, गिलय सत्व से स्टॉप कर सकते हैं, क्योंकि गिलय सत्व जो है ना एस्ट्रिंजेंट होता है, ब्लड रोकता है। और आप बोलिए कि गिलय का अगर क्रूड फॉर्म में लिए तो क्या इफेक्ट होता, और सत्व फॉर्म में लिए तो क्या इफेक्ट होता। इसीलिए इसका कसूर नहीं है किस फॉर्म में लेने का, वैद्य का अपना विश्लेषण करे, अपना बुद्धि उपयोग करे। वहां पर सत्व का बहुत ही, वही टीनोस्पोरा कार्डिफोलिया में सत्व दिए तो आपका ब्लीडिंग नहीं होता है, ये निश्चित है। और दूसरी बात, अभी जो बनाने के बारे में बोल रहे थे, मैं पुराने तरीका से जानता हूँ, मैं नया तरीका से तो नहीं जानता हूँ, कि गुरुची का ऊपर जो होता है छिलका होता है, प्लास्टिक जैसा जो होता है, उसे निकाल करके वो पूरा पानी में डाल करके खूब हिलाते 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 उसका जो फोम जैसा आता है, वो फोम जैसा आए तो उसको सुखाए तो ही सत्व माना जाता है।
It is not that extract or done something or something mixed or something processed. It is not what I heard, because I have not gone to, I am not manufacturer. But the old people generation, I discussed with them how this sattva now. Some doctor was questioning that why it is in white sugar form and another is a guduchi in crude form. It will not be like that. तो वो जो फोम जैसा आता है उसी को सुखाने के बाद वो तो व्हाइट ही रहता है। जी सर। तो ये सत्व ब्लीडिंग नहीं करता है कभी भी, और क्रूड का हम लोग मैं नहीं डिफर कर रहे हैं जानता सर, आज के टेबलेट, आज के सब्जेक्ट से हम डिफर कर रहे हैं सर। सब्जेक्ट अभी आए सो वो गुरुजी मैं सत्व का clarification कंपोजिशन है बर्बेरिन, फिनाइल प्रोपेन, डाइसेक्राइड, कोलिन, टिनोस्पोरिन, टिनोस्पोरोन, और ये सभी लगभग व्हाइट कलर या ग्रे कलर के हैं। और टेनिन ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं उसके 20 पार्ट वाटर एंड 5 पार्ट गिलोय लेके। तो मेरे हिसाब से जनरली सत्व देखेंगे आप तो वो या तो ग्रे कलर के रहेंगे या व्हाइट कलर के रहेंगे, वो एज ऑफ प्लांट कलर नहीं रहेगा। हाँ, उन्हीं का यदि घन बनाएंगे आप तो डेफिनेटली वो डीप कलर का होगा, क्योंकि उसमें टेनिन है, सेल्यूलोज है, फाइबर्स हैं, बहुत कुछ है उसमें। दिस इज माय हम्बल सम। बट सर मुझे भी 2 मिनट दे दीजिए। पवन शर्मा जी, डोमा जी जो बात उठा रहे हैं कि वो केवल डंडी को उसका बाहर की छिलका हटा के जब हम उसको चला के पानी में फोम बनाए उसको उड़ा के निकालेंगे, वो वाज दैट द ट्रेडिशनल प्रोसेस ऑफ गेटिंग? I am not very much acquainted about that. That may be the personal process, but it is not commercial process. नहीं, ग्रंथोक्त है क्या? डोमा जी बताइएगा क्या शांग धर्म में या कहीं इसके? कहाँ पहुंच गए सर हम गुरुजी में? टैबलेट पे आइए ना, प्लीज रिटर्न ऑन टैबलेट सर। चलिए काइंडली रिटर्न ऑन टैबलेट। Is any problem is there in tablets? Because we are regularly diverting our subject, sir. This is our problem. So the only possibility that can Sattu Giloy be used in a tablet form, or that anybody has used or made the tablet of Sattu Giloy for clinical purpose? No, not at all. It will be presented only in powder form. Only powder form. Thank you. Is there any other suggestion or query? सर गिलोय सत्व की टैबलेट बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसका वेट भी बहुत कम होता है जी। अगर हम 125 mg की भी टैबलेट बनाना चाहेंगे तो वो बहुत बड़े फॉर्म में आ जाएगा, और हम और सारे अगर बाइंडर्स यूज करेंगे गमेक या स्टार्च यूज करेंगे तो वो अननेसेसरी वो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, गिलोय सत्व की मात्रा कम हो जाएगी। वो वेट भी बहुत बड़ा इशू है, वेट बहुत हल्का होता है जी, और शायद उसकी एफिकेसी में भी प्रभाव पड़े। बिल्कुल, डेफिनेटली। थैंक यू डॉक्टर अवनीश, थैंक यू। और यहाँ पर अग्निहोत्री जी एक बात, तो हमारे फॉर्मूला में खासकर ये जैसा चित्रकादि वटी बोले हैं, चित्रकादि गुटी नहीं बोले। हाँ, और वैसा ही महायोगराज गुग्गुल गुटी, महायोगराज गुग्गुल वो राउंड में होना या टैबलेट में होना, ये संस्कृत टर्मिनोलॉजी में ही है। वटी क्यों होना चाहिए, गुटी क्यों होना चाहिए? राउंड जो होता है तो उसको गुटी माना जाता है इन जनरल, एंड फ्लैट होता है तो उसको वटी माना जाता है। और वटी किस फार्मूला को वटी दिया गया और किस फार्मूला का गुटी माना गया, ये तो क्लियरली अपने टेक्सचर में ही है, किसको फ्लैट बनाना किसको राउंड बनाना। लेकिन अभी तो बहुत क्या क्या आया कमर्शियल, अभी कमर्शियल टाइप में क्या हो रहा है तो दुनिया जाने। और शास्त्रोक्त अगर मैं तो मन ही मन हंस ही लेता हूँ, क्योंकि आज जो है ना बनाने का तरीका ऐसी है, बस सब कमर्शियल में, इसीलिए वो ड्रग एक्ट जो है ना अपने सिर पे आके बैठा है। सर इसमें एक सबमिशन है। थैंक यू सर। नहीं सुनो, क्या गुटी और बटी एक ही सेम माने फॉर्मुलेशन या प्रिपरेशन से बना सकते हैं, और उस कंडीशन में केवल शेप अंतर होगा या उसकी एफिकेसी या उसके एक्शन फार्माकोलॉजिकल एक्शन में कोई अंतर आएगा? क्योंकि गोल में शेप अंतर है सर। सिर्फ जो चीज गोल बन पाती थी वो गुटी बन गई, और जो चीज गोल नहीं हो पाती थी वो बटी बन गई। बिल्कुल, क्योंकि हाथ से बनते थे ना।
अब उसको हाथ से ऐसे दबाएंगे तो वो फिर वो आई थिंक गुटिका का प्रयोग मुख्य रूप से जो च्यूएबल ड्रग होती थी जिनको चूसते थे वो गुटिका के फॉर्म में होता होगा, और जो इनटेक करते होंगे वो शायद बटी के फॉर्म में होता है। नहीं, ये तो एक नहीं नो, ऐसे शिवा गुटिका कोई चूसता नहीं था, निगल जाती थी, ऐसा नहीं कर सकते उसको। शिवा गुटिका भी गोली आता है, उसको चाटते हैं लोग। ना अग्निहोत्री जी, यहाँ वटी चावने का होता है, गुटी निगलने का होता है। अच्छा, गुटी निगलने का होता है क्योंकि गोल होता है ना उसका, और चावने का होता है वटी जनरल। और दूसरा अभी बाइंडिंग से जो हार्ड, इसके बारे में गूगल के बारे में बोल रहे थे ना, इसीलिए गूगल का कहीं कहीं मैं इंडिकेशन में देखा हूँ तो ठीक ही है, क्योंकि उसको चाप करके खाने के लिए ही रहता है गूगल। और कोई बहुत कम लोग दिए हैं ये इंडिकेशन गूगल को चाप करके खाने का, इसीलिए गूगल का हमेशा चाप करके भी खा सकते हैं, चबा के खा सकते हैं। ब्राह्मी बटी हम कहते हैं चबा के दूध के साथ लेना है। ब्राह्मी बटी चबा के खा सकते हैं या निगल के खा सकते हैं, उसमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो हर्बल है, मिनरल नहीं ना। अच्छा, ये एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करने के लिए बोलते हैं चबाने के। और जो सैलिवा में डिजॉल्व करने का रहता है सैलिवा में, तब जो है ना उससे वटी माना जाता है। और जो निगलने का माने इंटेस्टिनल चले जाए अंदर, तो उसको गुटी माना जाता है। It should not be put on the tongue and should be put in dissolved in saliva, not necessary guti. And whereas vati, it is necessarily. व्योषादी बटी सब चूसी जाती हैं साहब, चूसी जाते हैं, इसीलिए अब व्योषादी बटी चूसते हैं तो बाहर क्राइटेरिया, दिस इज नॉट द क्राइटेरिया। नो, थैंक यू सर, थैंक यू। और जिन सब लोगों ने आज डिस्कशन में भाग लिया उनको बहुत धन्यवाद करते हैं, प्रोफेसर डॉक्टर रोमा जी से लेके हरीश रोमा जी और आप सभी लोग, और जिन्होंने उनके आंसर दिए हमारे दिनेश अवनीश जी हो गए, दिनेश जी हो गए, कौशल जी हो गए, सबका धन्यवाद। अब कोई चूंकि शंका या कोई समय नहीं एक्स्ट्रा हमें अब खर्च करना है, क्योंकि सभी के समाधान आ गए हैं। मैं प्लेटफॉर्म को वापस डॉक्टर प्रोफेसर पवन शर्मा जी को वापस करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। आज का वेबिनार बहुत ही अच्छा रहा। अलग अलग क्वेश्चंस भी हुए, अलग अलग सॉल्यूशंस भी हुए। मैं सभी स्पीकर्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। कल एक कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट ले रहा हूं सर, स्वर्ण प्राशन, इम्यूनिटी और टॉक्सिसिटी। क्योंकि अभी तक आयुर्वेद वाले चिल्ला रहे हैं कि इम्यूनिटी होती है, अभी 1 महीना पहले से आईएमए वालों ने चिल्लाना शुरू कर दिया कि टॉक्सिसिटी होती है। उनकी संख्या ज्यादा है, हम सब मिलके भी चिल्लाएंगे तो उतनी आवाज हमारी नहीं जाएगी जितने वो एक स्टेट से चिल्ला देंगे तो हमारी आवाज दबा देंगे। तो ये वेल इन टाइम ये प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन, वेदर स्वर्ण प्राशन इज इंक्रीजिंग इम्यूनिटी और क्रिएटिंग टॉक्सिसिटी, इसमें हमारी खामी नहीं थी। सब्जेक्ट बड़ा रिलीवेंट है सर, और मैंने उसी के लिए उसको रखा, स्वर्ण प्राशन को, कि टॉक्सिसिटी या इम्यूनिटी। सीधा मैं क्वेश्चन करूं, यदि इसमें हमें नरेंद्र जैन वो आलोक जी का साथ मिलता हो, कोई एलोपैथी डॉक्टर स्वर्ण प्राशन कर रहा होता तो बड़ा अच्छा होता। बिल्कुल ये हम चाहते हैं, वो अपना पक्ष रखें, आयुर्वेद वाले तो सब उसकी इम्यूनिटी का पक्ष रखेंगे, तो वो भी तो अपनी बात आके मैदान में यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर कहें कि वो किस एंगल से कहते हैं। लेकिन अभी तक प्रोफेसर कामिनी धीमान, वैद्य पारुल जोशी, डॉक्टर आर्या एस मेनन, डॉक्टर सौरिश दास, ये 4 लोग कल बोलेंगे वेदर स्वर्ण प्राशन इज इंक्रीजिंग इम्यूनिटी और वी आर क्रिएटिंग टॉक्सिसिटी और अननेसेसरी आईएमए इज ऑब्जेक्ट। ये भी एक डॉक्टर अवनीश, आपके पास अगर कोई हो आईएमएस से जुड़े हुए या अपने हरिद्वार में कोई जो इस पर दखल रखे, बगैर डॉक्टर मालशे जी को कांटेक्ट कर लीजिए, वो तो पॉजिटिव ही बोलेंगे। मालशे जी वन ऑफ द एक्सेप्शनल। आपकी आवाज नहीं आ रही। मिशन हॉस्पिटल में भी देखते हैं शायद। हाँ, डॉक्टर मालशे जी को कम्युनिकेट करिए कि ये टॉपिक है। हॉस्पिटल में भी देखते हैं, कोई हो सकता है वहाँ पे भी।
और ये सर 1 तारीख के बाद का पहला रविवार है, इसलिए हमने कल 4 बजे से वेबिनार रखी है, जिससे सब फ्री हो 4 बजे 4 PM, तो वो 5 बजे तक सब फ्री होके अपने अपने काम में लग सकते हैं। रात के 10 साढ़े 10 बजे तक संडे को परेशान नहीं करेंगे किसी। सर हम लोगों की मीटिंग है कल अपने एलुमनाई मीट के लिए ऋषिकुल की 5 बजे कर लीजिए, अगर 3 बजे मीटिंग है। वो तो चलो कोई नहीं, हम 4 बजे तक फ्री हो लेंगे। 4 बजे 3। थैंक यू सर, थैंक यू वहीं वेरी मच। से जुड़ जाएंगे जी। जी जी बहुत जी, बहुत आपकी जय हो, आपकी जय हो। 3 से 4 हैं? बहुत अच्छा, ऊपर 3 वाला से 4 है, महाकाल वही जुड़ कालों की। जाएंगे लेट होंगे तो। चलिए, अब सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार, बहुत शुभ रात्रि। बहुत थैंक यू, गुड नाइट जी।